Aman, Aman, We are starting. please start. Pallavi, Yes, sir. okay, please A proceed. very warm evening to every one of you. Hope you all had a very happy festive break. With these good vibes, let's get back to our academic life. I might be very sure you are quite excited to explore some of the prominent domains. Better to say, the need of the hour. Wanna get some handy skills. For this and lot more, AC Coding Club has organized a full-fledged pathway webinar about the technologies in demand. Web development, artificial intelligence, data science, IoT, and blockchain. I, Pallavi, Pallavi Prasad from Computer Science Pallavi, and Engineering Department. can you Yes. clear the voice? Yes. Your voice is not very clear. Okay, sir. Um, Yes, now it is clear. I, Pallavi Prasad from Computer Science and Engineering Department, second year, will be your host for the webinar. I would request Orgo to initiate. Hello everyone, I'm Orgo Sadhu, a student of Computer Science and Engineering Department, second year. And as promised on the day of induction program that we'll be having an webinar on modern technologies. Yeah, we are back with that. So without wasting any further time, let's call our first speaker, Mr. Jan Pandit, to conduct the meeting further. Thank you. Thank you, everyone. Okay, so मैंने actually I'm supposed to share a presentation, so मैं screen share करने वाला हूँ. आप लोग please follow करो. I didn't get much time to put together a nice presentation, so this will be short and sweet, like a थोड़ा बहुत. Just I have only added the headings. So I'm Jayan Pandit from EC batch of 2025, and I'll be talking on fundamentals and roadmap of web development. तो कमिंग थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं सेशन को, ठीक है ना? तुम लोग थोड़ा ट्राई टू इंटरेक्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विल बी स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन. सो हाउ वाज इंटरनेट बॉर्न? थोड़ा चैट में देखते हैं, बताओ कुछ. ICC वाले I know because you have, I think I'm pretty sure you still have it in a curriculum. तो do you have, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर याद है तो बोल सकते हो. कैसे इंटरनेट आया था? The first form of the network that the world had seen. कोई आइडिया है चैट में जो लोग भी हैं? या यूएसआर, एग्जैक्टली ARPANET, राइट? ठीक है, वर्जन का आता है. और दो ही जन बस. हाँ, ये एक्चुअली इट वाज ARPANET. तो ARPANET was United States, the world was actually beginning to explore the power of computers, and naturally networks also came into question. तो यूएस आर्मी ने एक्चुअली एक प्रोजेक्ट कमीशन किया था, एंड दे कॉल्ड इट द आरपा, एडवांस्ड रिसर्च एंड क्या था फुल फॉर्म, क्या था इसका? आरपा, ARPA, किसी को याद है? I think it was Advanced Research and Project Agency, right? No, you can just type into the chat, or you can unmute and say, no problem. Go ahead. Yeah. First ARPANET came there. हाँ, क्या था? Full form क्या था? मैंने just बोल दिया अभी. You can unmute and Advanced say. Research Projects Agency Network. Yeah, it was a defense का एक department था US Army में, and they commissioned this project. It was called ARPANET, ठीक है ना? And they did it during the Cold War. So just Cold War start ही होने वाला था, तो they just did it to stay ahead of the Russian people. Cold War के बारे में सब पता होगा सब लोगों को. So that was like the foundation of the modern day internet. तो उस time ARPANET एक
closed network था uh, that started its development in some of the most prominent universities in the US, जो western coast है US के, Stanford University, UCLA, वहां पे actually ये जो computer scientists है, they started developing ARPANET, and it was like in the 1979s that this project came into completion, almost completion. And जो आजकल शायद आप लोगों को मालूम है ये दो terms, TCP and IP. Do you know TCP and IP? किसी को full forms याद है, and or if anyone can give a definition, quick and short definition. Internet protocol. Yeah, internet protocol. And TCP का क्या है? अरे नहीं, just you don't have to raise your hand, just ऐसे ही बोल दो unmute करके. TCP क्या है? Transmission Control Protocol, right? तो इंटरनेट कैसे काम करता है बोलना, एक पैकेट्स हम लोग we send packets from device to device, है ना? क्लाइंट से सर्वर की तरफ पैकेट सेंड होता है और फिर सर्वर भी वापस क्लाइंट को पैकेट सेंड करता है, दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज कैरिंग. और टीसीपी आईपी एक्चुअली केम इनटू बीइंग जब ARPANET बन रहा था. तो TCP IP, ये दो separate terms. So TCP actually is the set of rules that governs what the structure of that packet is going to be. Today the whole world is actually following the TCP protocol. पहले जब ARPANET बना था तो like during the 1970s, end of 1970s, early of 1980s, तो उस टाइम नए छोटे छोटे नेटवर्क्स इमर्ज कर रहे थे. तो नेटवर्किंग बहुत मतलब एकदम अर्ली स्टेज में था, तो छोटे छोटे नेटवर्क्स इमर्ज कर रहे थे उस टाइम. एंड ARPA was actually kind of ahead of all of them. So it was ahead of all of them, and gradually the whole world actually accepted the foundation, the TCP/IP protocol. The TCP/IP protocol is one of the major contributions that led to the modern day internet. लेकिन ARPANET हम लोग का modern day internet नहीं है. The modern day internet was started by it was actually after ARPANET became, in spite of there was like a small discussion, I don't really know, there were conferences held that and many people, many politicians actually pitched the idea that this ARPANET could be publicized and this could be used by everyone, the common public. So it was a big thing at that time. So generally, and तो उसी के बाद the first website was built. तो देखो मेरा मेरा जो ये साइट है, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट वेबसाइट एवर बिल्ट? किसी को याद है? किसी को मालूम है ये? आई जस्ट अनम्यूट करके बोल दो, रेस करने की जरूरत नहीं है. किसी को मालूम है फर्स्ट वेबसाइट एवर बिल्ट? CERN था. डू यू नो CERN स्विट्जरलैंड? They actually running the LHC, Large Hadron Collider. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, the biggest machine in the entire human history. They are working on particle physics. तो CERN का वेबसाइट 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था using Objective-C as the language. तो मैं छोटा सा एक स्नैपशॉट दिखा दूंगा तुम लोगों को. It's like जैसे गूगल कर रहा हूँ, मिल जाएगा. देखो ये वाला सर्च करना है, यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ था. सो सी info.cern.ca, जिसमें अगर जाओगे तो ब्राउज द फर्स्ट वेबसाइट, जो फर्स्ट लिंक है उसमें टैप करना. दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट राइट नाउ. आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल प्रॉपर्ली ना, थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ. तो दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट. दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट वेबसाइट एवर इन ह्यूमन हिस्ट्री. ठीक है ना? इसका अगर HTML दिखेंगे, किसी को तुम लोगों को मालूम है HTML क्या होता है? HTML is like the language we used. We use it to structure project, yeah, right. We use it to structure our web pages. तो HTML use करके उन्होंने बनाया था ये World Wide Web project, and this was like the project itself, जो website उन्होंने बनाया था. This was generally used. He used it to share files from the CERN headquarters to everywhere around the world, जहाँ पे भी research हो रहा था. So this was the major objective. तो इसीलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया WWW प्रोजेक्ट, W3, जिसको हम लोग आज प्रॉपर्ली मतलब हम लोग जानते हैं. W3 स्कूल शायद देखे होंगे बहुत सारे रिकमेंडेशन गूगल सर्च वगैरह में. सो दैट W3 इज कमिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड वाइड वेब, है ना? तो दिस वाज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट. तो देखो थोड़ा मतलब ये वाला थोड़ा ये करना है. आई जस्ट पुट द लिंक इनटू द चैट बॉक्स फॉर यू टू एक्सप्लोर. बाद में एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? तो अभी जो current scenario है 21st century, we are in the 22nd year of 21st century. तो अभी तो इंटरनेट बहुत आगे पहुंच गया है ना? पहले जो इंटरनेट था और अभी इंटरनेट बहुत आसमान पाताल का फर्क है ना? तो उस टाइम basically internet was all about information, and these web pages were shared across all the globe, and there wasn't like a
बहुत स्टैटिक वेब पेजेस थे, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि फेसबुक जैसे कुछ बहुत बड़ा जैसी चीज नहीं था। आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, फिर आप लोग बात कर रहे हो, ये तो बहुत हाई फाई वाला चीज होगी। उस टाइम जब 1991 में इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, तो द फर्स्ट वेबसाइट दैट वाज बिल्ट वाज दिस वन। ये देख सकते हो, ये स्टैटिक वेबसाइट है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हाइपरलिंक्स है और यही सब है। और ये जो देखो यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना, दी प्रोजेक्ट डॉट HTML, दीज आर प्लेन HTML फाइल्स, इसमें कोई स्टाइलिंग वगैरह भी नहीं है ना। व्हाट्स आउट देयर देख सकते हो, एकदम स्नैपी वेबसाइट है, क्लिक कर रहे हो और आ जा रहा है, बहुत फास्ट, राइट। तो पहले इंटरनेट ऐसा ही हुआ करता था। इवन विकिपीडिया आई थिंक इट स्टार्टेड इन द ईयर 1995। तो ऐसे ही बहुत सिंपल उन लोगों ने बनाया था, इट वाज ऑल कंपोज्ड ऑफ स्टैटिक साइट्स। तो अभी जो सिनेरियो है अभी तो बहुत अलग है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब डेवलपमेंट क्या है? तो एक्चुअली मेरा टॉपिक है वेब डेवलपमेंट, सो लेट्स डेल्व इनटू द टॉपिक एग्जैक्टली राइट नाउ। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया मैंने। दिस वाज जस्ट टू सर्व एज अ मोटिवेशन कि तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ोगे, क्यों करोगे वेब डेवलपमेंट, ठीक है। जनरली मैं सुनता हूँ बहुत जन, जो मेरे इवन माय फ्रेंड्स यू नो लाइक, जैसे कि अरे वेब डेवलपमेंट करेंगे, बहुत बोरिंग लगता है। अरे किन किन को बोरिंग लगता है पहले बताओ? पीपल हु हैव एक्चुअली ट्राइड वेब डेवलपमेंट बिफोर, किनको बोरिंग लगता है? अरे वेबसाइट बनाना बहुत बोरिंग है, इसमें क्या कोडिंग का चीज है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। कोई है ऐसा जिसको बोरिंग लगता होगा? हैज एनीवन ट्राइड एवर? तो मालूम नहीं, in case you have tried, and many people, even I was in your place in the early stages of my BTech, तो मेरे को भी लगा था वेब डेवलपमेंट क्या ही करेंगे सीख के। लेकिन the world, but the truth is nowadays the whole world is actually living on the internet. Almost everything that you do is more or less everyday life में सब कुछ जो करते हो, almost all of them is somehow or the other related to internet, है ना। व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करना, तुम्हारे वेबसाइट, यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरना वगैरह, ये सब कैसे हो रहा है? वो ना इंटरनेट की वजह से ही हो रहा है ना। तो अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये सब नहीं हो पाता। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट इज वेब डेवलपमेंट एग्जैक्टली? तो व्हाट इज द इंटरनेट, पहले बताओ, इंटरनेट क्या चीज है? कोई अनम्यूट करो, बताओ। HTML सीखे थे और CSS, ओके, नाइस ग्रेट। तो कुछ लोगों का यहाँ पे फाउंडेशन है, यहाँ पे है ना, ट्राइड इन क्लास 9। डिड यू फाइंड इट एंजॉयबल दो? मालूम नहीं एंजॉयबल है कि नहीं, ठीक है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, देयर इज मोर टू लाइफ एंड वेब डेवलपमेंट देन जस्ट HTML एंड CSS। एक्चुअली ये थोड़ा बहुत, क्या बोलूं मैं, इट्स इंटरेस्टिंग, तो यू विल गेट इनटू इट, राइट। तो कोई बताओ इंटरनेट का डेफिनेशन क्या है? इंटरनेट एग्जैक्टली, इंटरनेट एब्स्ट्रैक्ट है, यू कैन नॉट टच इंटरनेट, राइट। व्हाट इज इट एग्जैक्टली, है क्या? अनम्यूट करके बता दो, कोई भी जनरल आइडिया। क्लास 8 HTML का थ्योरी हाँ पढ़े होगे। इंटरनेट, हाँ, इंटरनेट इज अ mesh of web of smaller networks, yeah, okay, yeah, network, right? The word network comes very frequently. See, network. So yeah, exactly, it's a network. It's not the computers by themselves, but the fact that the computers are linked together is what gives rise to the internet, right? So in web development, oh my god, ये तो अरे वाह, मस्त डेफिनेशन मिल रहा है मेरे को। ग्लोबल कंप्यूटर में वैरायटी डेफिनेशन, ठीक है, या ओके, दिस इज कूल डेफिनेशन, ठीक है, सही है। सी ग्लोबल नेटवर्क टू कनेक्ट पीपल, एग्जैक्टली। तो ऑल ऑफ यू आर राइट, ठीक है। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड। यू कैन आल्सो, मतलब उसको थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन कर सकते हो। So internet is, as someone said, as all of you said, a network of computers. So internet में nodes होते हैं, है ना। What is the internet? Internet chart. You know, like nodes क्या होता है? Nodes मतलब end point, मतलब beads, little dots. If you're thinking of the internet, you can represent it using a dots internet mesh. ये एक इंटरनेट है ना। This is a representation of an internet. तो देख रहे हो, ये सब मैंने एवरी डिवाइस ऑन दिस नेटवर्क, मतलब इसको हम लोग नोड्स कहते हैं, ठीक है। एंड वेब डेवलपमेंट इज एक्चुअली ऑल अबाउट सेटिंग अप अ न्यू नोड इन द इंटरनेट। इंटरनेट ऑलरेडी बहुत बड़ा है ना। और आप लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं क्या होता है? यू एक्चुअली ऑल यू डू इज हेल्प टू सेट अप अ न्यू नोड to this existing network. पहले all of these nodes were about only information interchange, but nowadays it has like transcended into a whole new level. अभी आजकल वेब सर्विस है, जैसे तुम्हारा क्या मतलब Amazon, you can buy stuff in the internet, you can order medicines, you can even do consultancy, you can Facebook वगैरह, social media, ठीक है ना।
फिर न्यूज देख सकते हो इंटरनेट में। तो इंटरनेट इज मोर जस्ट इन्फॉर्मेशन राइट नाउ, ठीक है, बहुत कुछ हो गया, इट्स अ ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो कुछ भी डाल सकते हो इधर, एंटरटेनमेंट का भी चीज है यहाँ पे, सो दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। So web development is actually all about adding a new node to this existing network. ये new node कैसे add करना पड़ता है, ठीक है। अब moving to the next topic, the client server architecture। मैंने ये MS Paint में एक image import करके जल्दी में बनाया अभी 15 मिनट पहले, ठीक है। तो client server architecture के बारे में, अच्छा okay, so instead of diving in deep into this, first of all let me just ask, what do you know about the client server architecture? अनम्यूट करके बोल सकते हो या ऐसे ही मैसेज कर सकते हो, कोई बताओ। कोई है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मतलब तुम लोग जो भी, हाँ, सर्वर इज द मास्टर कंप्यूटर विद सर्व द क्लाइंट, हाँ एग्जैक्टली, क्लाइंट कंप्यूटर्स। तो क्लाइंट कंप्यूटर्स मतलब हम लोग है ना, जो हम लोग सारे क्लाइंट्स हैं, जो नेटवर्क के सारे नोड्स हैं, कुछ नोड्स हमारे सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं, कुछ नोड्स हमारे क्या होते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, राइट। तो क्लाइंट से डेटा रिक्वेस्ट होता है और सर्वर तुमको उसको फीड करता है डेटा। सो क्लाइंट सर्वर तुम लोगों ने पढ़ा होगा बहुत शॉर्ट में, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। इट्स एक्चुअली मैंने एक यहाँ पे जो MS Paint वाला डायग्राम बनाया था, तो दिस इज द एंड यूजर, राइट, दिस इज, ये हम लोग हैं। तो एंड यूजर्स हम लोग कैसे इंटरनेट को एक्सेस करते हैं बोलना, या दीज आर द डिफरेंट वेज, हाइपरटेक्स्ट वेबसाइट्स, तो वेबसाइट, वेब ऐप वगैरह, जो फेसबुक, तुम्हारा व्हाट्सएप वेब हो गया, ठीक है ना, न्यूज के एप्स हो गए, ये सब वगैरह, ये हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनाते हैं जनरली, राइट। तो जावास्क्रिप्ट इज एक्चुअली द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट वी यूज टू मेक द वेबसाइट डायनामिक, और HTML तुम्हारा बेसिक जो बेसिक लेआउट है उसको डिफाइन करता है, और CSS एक्चुअली स्टाइल शीट that adds style to the website। मतलब ऐसे तुमने देखा ही है, यहाँ पे तो मैंने दिखाया ही कि कैसे दिखता है एक्चुअली तुम्हारा एक सिंपल HTML वेबसाइट। CSS एक्चुअली व्हाट हेल्प्स स्टाइलिंग इट, हेल्प्स टू स्टाइल इट, राइट। तो तुम लोग फर्दर थोड़ा मेरे को बताओ कि और क्या क्या फॉर्म है जिसमें तुम लोग एज अ क्लाइंट इंटरैक्ट विद द इंटरनेट, राइट। तो कैसे इंटरैक्ट करते हो बोलना, मोबाइल ऐप्स के थ्रू। You have a mobile app for Facebook, you have a mobile app for everything, almost everything। WhatsApp के लिए मोबाइल ऐप है ना, डेस्कटॉप ऐप भी है। तो एक्चुअली हम लोग बनाते हैं, मतलब वेब डेवलपमेंट में हम लोग ये सब बना सकते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी मिला के। पहले तो हो गया वेबसाइट्स, ठीक है, सो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस वन मेजरली इन वेब डेवलपमेंट, बट आजकल ये भी बहुत पॉपुलर है, तो ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर हाइपरटेक्स्ट वेबसाइट के अंदर ओवरलैप कर जाता है वेब डेवलपमेंट साथ। इवन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट तुम्हारा एंड्रॉइड हो गया, फ्लटर हो गया। फ्लटर के बारे में अगर नहीं सुनोगे तो सुन जाओगे, मतलब ये इन द नेक्स्ट वन ईयर you'll be able to hear about Flutter। रिएक्ट नेटिव के बारे में सीखोगे, वो iOS तो तुमको मालूम है एप्पल का डिवाइस होता है, तो एंड्रॉइड एंड iOS, डेस्कटॉप ऐप तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ वेब डेवलपमेंट आई थिंक इलेक्ट्रॉन इज वेरी पॉपुलर, यू विल बी स्टडीइंग अबाउट इट लेटर, मतलब स्टार्ट कर सकते हो तुम लोग इलेक्ट्रॉन पढ़ना, बट मोस्ट ऑफ द मेन टॉपिक ऑफ माय टॉक विल बी अबाउट दिस हाइपरटेक्स्ट वेबसाइट्स, ठीक है। तो जनरली यूजिंग जस्ट जावास्क्रिप्ट इज वेरी डिफिकल्ट। हम लोग जावास्क्रिप्ट से एक वेबसाइट को डायनामिक बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है जनरली, तो वी एक्चुअली यूज अ फ्यू frameworks that have been pre-built to make our websites dynamic, that gives a very app-like feeling to the normal websites, ठीक है ना। जैसे वेबसाइट तुम्हारा फेसबुक हो गया, ठीक है, it's made using React, मतलब वो एक ऐप हो गया। तुम even when you are opening Facebook on the browser, तुमको एक ऐप-like feeling आता है कि लगता ही नहीं है कि वो एक सिंपल HTML CSS का वेबसाइट है। So what makes it more dynamic? These are the frameworks, ठीक है। ये सारे फ्रेमवर्क्स तुम्हारे, उनमें से React.js एक्चुअली मोस्ट पॉपुलर है। उसके बाद गूगल का एंगुलर आता है। React.js इज मेड बाय फेसबुक, इट्स एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। एंगुलर भी वैसा ही है, इट्स मेड बाय गूगल। Vue.js, Svelte, ये भी ओपन सोर्स है एंड दे आर प्रीटी पॉपुलर एज वेल। तो React.js एंगुलर सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं दी API, जो मतलब जिसको सर्वर क्लाइंट जिसको हम बोलते हैं, दी API एंड दी डेटाबेस एसेट्स, मतलब यहाँ पे डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है ना। ये API और ये डेटाबेस मिला के हम लोग एक्चुअली सर्वर कंस्टिट्यूट करता है। और जनरली सर्वर इज एक्चुअली द हार्डवेयर दैट योर सर्वर एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन।
तो सर्वर एप्लीकेशन बनाने के लिए वेब डेवलपमेंट में हम लोग यूज करते हैं कुछ फ्रेमवर्क से जावास्क्रिप्ट में ही लिखे हुए. यू कैन यूज एक्सप्रेस.js, Django, Flask, Spring Boot वगैरह. उसमें से ये जो एक्सप्रेस.js है ना, ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है. So in JavaScript language, you'll be able to create this express.js, and this is the main topic of our talk. ठीक है, इसके साथ हम लोग डील नहीं करेंगे. These are more advanced and you can use even Python. Django और Flask Python का चीज है. So express.js is JavaScript framework and it's easy. और डेटाबेस में अगर आए तो डेटाबेस में तो जहाँ पे तुम्हारा क्लाइंट का डेटा, जहाँ पे जैसे फेसबुक, यू नो, योर फ्रेंड के, तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट, तुम्हारा फ्रेंड लिस्ट है, पोस्ट का जो इन्फॉर्मेशन है, हाइपर मीडिया स्टोर्ड इन योर पोस्ट्स, यू नो, लाइक द पिक्चर्स, द वीडियोस, वो सब कहाँ पे स्टोर होता है? एक डेटाबेस होता है. एंड डेटाबेस भी बहुत सारा होता है, जिसमें MongoDB वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस अमंग बिगिनर्स नाउअडेज, एंड पीपल आल्सो यूज्ड इन द अर्लियर टाइम सिंस, क्योंकि SQL आल्सो वाज अ पॉपुलर वन. फायरबेस वगैरह, ओरेकल वगैरह, मरिया डीबी, ये सब होता है. तो इनमें से ये जो तीन जो डेटाबेसेस है नीचे के, दीज आर कॉल्ड एसक्यूएल डेटाबेसेस. ठीक है, दे यूज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एज देयर क्वेरी लैंग्वेज, मतलब डेटाबेस क्वेरी में के लिए. लेकिन ये सब जो है ऊपर वाले दो, दे आर एक्चुअली नॉन एसक्यूएल या नो एसक्यूएल तो भी बोलो. ठीक है, दे डोंट यूज एसक्यूएल, दे आर मोर, इसके बारे में जानोगे. ठीक है, दे आर मोर फ्लेक्सिबल इन कंपैरिजन टू दीज. तो ये तुम्हारा हो गया. एंड अच्छा, ये सर्वर को जनरली हम लोग वेब डेवलपर्स जनरली एपीआई बोलते हैं. ठीक है, बिकॉज एपीआई इज बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर द डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द क्लाइंट एप्लीकेशन टू इंटरैक्ट. दैट इज व्हाई उसको एपीआई कहते हैं लोग. और एपीआई, ये सब जो मैंने फ्रेमवर्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एपीआई का ही डेफिनेशन है. दीज आर लाइक व्हाट यू यूज टू बिल्ड द एपीआई. ठीक है ना. और वेब डेवलपमेंट इज व्हाट constitutes all of these things together. आप यहाँ पे फ्रंट एंड में बना रहे हो, ये वाला जो चीज है यहाँ पे एंड यूजर्स वाला चीज, ये हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं पॉपुलरली. ठीक है, और ये डेटाबेस वगैरह सर्वर वाला, एवरीथिंग दैट डील्स विद द सर्वर इज कॉल्ड द बैक एंड. और ये हम लोग हैं, आई एंड यू. ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में इतना ही है, बस सिंपल सी चीज है. नेक्स्ट टॉपिक इज फुल स्टैक, मीन, मर्न एंड अदर्स. तो फुल स्टैक एप्लीकेशन, ये फुल स्टैक वाले टर्म्स से तुम लोगों ने सुना ही होगा, है ना. तो हैव यू हर्ड अबाउट या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज? यस. तो मर्न और मीन स्टैक सुना ही होगा. This is nothing. This is just the technologies you use, the frameworks you use to build one full stack application. मतलब, you know, starting from, ये जो diagram ये actually important है, starting from the end user to the API and the assets, the database management. ये वाला तुम कौन से technologies use कर रहे हो, वो वाला, उसके लिए एक short form, एक acronym है, mean and mern. तो जनरली ये दोनों मोस्ट पॉपुलर है. मर्न स्टैंड्स फॉर MongoDB, E स्टैंड्स फॉर Express, R स्टैंड्स फॉर React.js जो तुम्हारा फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, और N स्टैंड्स फॉर Node.js. Node.js is actually what, you know, the Node.js is what the servers use to run their programs. So JavaScript है जनरली, वो एक ब्राउजर का लैंग्वेज था, लेकिन रिसेंटली, यू नो, the development of Node.js बहुत easy हो गया, because we can now use JavaScript, which was majorly a browser centered language, to even build server side applications. इसीलिए वो नोड है. नोड मतलब जैसे तुम्हारा एक पाइथन के साथ आता है, देखना, एक प्रोग्राम आता है जिसमें तुम, मैं दिखा सकता हूँ अभी एक्चुअली. नोड, दिस इज व्हाट इट इज. ये तुम्हारा नोड जैसे, आई जस्ट फायर्ड अप अ नोड.js इन कंसोल. हाय, ठीक है, ये तुम्हारा नोड जैसे, आई कैन एक्चुअली यूज इट टू रन माय सर्वर एप्लीकेशन. तो मेरा एक कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है ना मेरा, एक दिस इज एक्टिंग एज अ सर्वर नाउ. If I am running a server application, it's not listening to any request right now. अगर वो listen करता तो मेरा कंप्यूटर एक सर्वर हो जाता. तो सर्वर एंड क्लाइंट बस एक टर्म्स का चीज है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग बोलेंगे क्या है. अच्छा, मर्न, आई टॉक अबाउट मर्न. सो व्हाट इज मीन नाउ? मीन इज नथिंग. तुम्हारा जो आर है, मैंने बोला कि पहले यहाँ पे फ्रेमवर्क में बहुत कुछ यूज होता है. I talked about React.js and Angular. So the A instead of R is actually Angular, Google's Angular. तो AngularJS तुम लोग यूज करके फ्रंट एंड में वेबसाइट्स बना सकते हो. ठीक है, उसके बाद आता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम. तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम में गिट और गिटहब आता है, तुम लोगों ने नाम सुना ही होगा. मतलब बीटेक में घुसते लोग ये नाम सुना लगते हैं. तो प्लीज मेक श्योर whenever you are building, you know, whenever you are building real life projects, it goes beyond just one person, right? So you need to control the access and कौन commit कर सकता है, मतलब कौन ऐड कर सकता है अपना कोड रिपोजिटरी में, तुम्हारा कोड का जो रिपोजिटरी है, और तुम्हारा प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए वी यूज एन एप्लीकेशन कॉल्ड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम. वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. तो जनरली द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज
Git और GitHub, और एक Apache subversion भी आता है जो not very common nowadays, and there is also CVS Mercurial वगैरह भी है, वो अभी commonly use होते नहीं है, तो वो पुरानी चीज़ों में. Generally people nowadays use Git and GitHub, ठीक है ना. तो Git and GitHub भी सीख लो, so it will be very helpful in your journey. मतलब you'll be able to collaborate with others. Your friends will be able to add code to your code base. It's like what we use, it's just basically a tool that we use to keep track of the changes that are in our repository. Suppose तुमने एक फाइल बनाया hi, और किसी ने ऐड किया यहाँ पे hello. This will be saved as a history. तो पहले तुम्हारा जो Git will actually save the first state. तुमने जैसे सेव किया तो उसने सेव किया इस फाइल को hi बोल के, और the second state will be saved as hi hello. So this is how it keeps tracks of changes. छोटा सा मैंने बता दिया कि कैसे काम करता है actually. Git is more than just hi hello. ठीक है ना. तुम लोग सीखोगे. You can actually go through. We will also be having workshops on Git and GitHub. So stay tuned for that. ठीक है. उसके बाद okay, I guess I'm done. Build projects बनाओ. Project का आइडिया तुम्हारा पहले HTML CSS सीखने के बाद the first thing they should be building is a portfolio website. Portfolio तुम लोगों को मालूम है portfolio क्या है? Anything? Portfolio is something that talks, a website that basically talks about you. मतलब तुम्हारे achievements, who you are in general, तुम्हारा short bio, the work that you have done. You can all have all of that in portfolio. And if you are a web developer, you should always have a portfolio. So try to build HTML, CSS के कुछ छोटे-छोटे projects build कर सकते हो. You can start with that. And then gradually after mastering HTML and CSS, I'll say start with React. Yeah, React as a framework you can start. And then after you have mastered the React वगैरह master कर दी, उसके बाद backend में जाना. Express.js. Express and MongoDB. This will make you a full stack developer. और आप लोग मतलब अच्छा, और एक चीज, जावास्क्रिप्ट सीख लिया ना. जावास्क्रिप्ट एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज. अगर जावास्क्रिप्ट सीख लिए तो भूखे तो नहीं मरोगे. ठीक है. जावास्क्रिप्ट एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेसिकली ऑल ऑफ दिस व्हाटएवर आई जस्ट सेड, दिस मर्न स्टैक, ऑल ऑफ दिस डील्स विद जावास्क्रिप्ट. मतलब पूरा एक मर्न फुल स्टैक एप्लीकेशन तुम लोग जावास्क्रिप्ट से बना सकते हो. सो लर्न जावास्क्रिप्ट, लर्न फ्रंट एंड फर्स्ट, उसके बाद बैक एंड में मैं बोलूंगा यही. हाउ टू यूज गिटहब मैंने जस्ट बोला कि हम लोग विल प्रोबब्ली हैव सेशंस आफ्टर दिस, और यू कैन आल्सो इफ यू आर अ डेयरडेविल देन यू कैन गो अहेड ऑन YouTube and just do a quick search and look at the tutorials that are there. And there are very good GitHub tutorials already on GitHub. Now I'm learning C programming language. हाँ एकदम. If you are like a beginner to coding in general, you can always start C. C is actually great for giving an understanding of how you can build algorithms and solve real life problems. But if you are like a more seasoned programmer, you can actually go on to develop on the web development. Actually development के लिए तुम लोग को problem solve करने का जरूरत है नहीं. Yeah, you need to have the algorithmic approach in your mind. तो C अगर थोड़ा सा बेसिस फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अगर तुम लोग C सीख लिए, no, I'm a beginner. Yeah, sure. You can just learn C and then move on to web development if you wish. If this is your cup of tea, I mean. Currently, I'm in learning Python. Great. सीखो अभी first year तुम लोग का. So most of you are from first year here. So you'll be having a lot of opportunities and time. So you can always start learning anything you want. ठीक है? Okay, so I guess I'm done for the day. I'll hand over to the host now. Thank you, everyone. Yeah, thank you, Jayant. It was an informative session. Now I would like to call Aman Khan Bhaiya to conduct the session. But before that, I would like to make an announcement that at the end of the session, we have a feedback form. If you fill up that form, you'll get a participant certificate. And if you fill up that form, you can get that will actually help you in MOOC's mark points. Okay, so yeah, Aman Bhaiya, please. Okay, so hello everyone. I hope I'm visible and audible as well. And I'm sharing my screen. Yes, audible and visible also. Okay. Continue. So, is my screen visible, sir? Yes. Yes. So the next topic that we have choose is exactly data science, and I'm going to let you know that it's not technology at all; it's entire field. So I'm going to start the session.
So before learning about data science, let's try to understand what exactly data is, because without learning data, we can't understand what is data science, right? So every day we use internet, just like Jen said, like internet का hype बहुत अभी बढ़ चुका है, but the actual reason why internet is so ऐसा grow क्यों हो रहा है, इसका actual reason ये है कि आप ये समझिए कि around last Aman, 15 years. Yes sir, hello. Aman, Yes sir. uh, your your voice is not as louder. Okay, hello. Okay, so wait a minute, sir. Make it louder Okay, sir. and not clear also. Can you come in front of your camera or the mic? Yes. Hello. 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 Yes. Now clear. Is it clear now? Yes. So we हाँ are भैया, talking. it's audible. We are talking about the data. So exactly what data is. हम लोग डेटा को जब समझते हैं तो हम लोग को लगता है कि डेटा कुछ नंबर्स होंगे, कुछ वैल्यूज होंगे, राइट? कुछ इंटीजर्स, कुछ फ्लोट ऐसे होंगे. तो बट एग्जैक्टली डेटा कुछ और ही है, ठीक है ना? और डेटा आया कहाँ से, इसका रीजन भी जैन ने बताया, ड्यू टू द यूजर्स. जैसे जैसे बढ़े इंटरनेट के, अब इंटरनेट कैसे बढ़ा ये भी उसने बताया. बट एक एक्चुअल रीजन व्हाई इंटरनेट वाज सो ग्रोइंग इन टुडेस वर्ल्ड, बिकॉज कंप्यूटेशन पावर बहुत इंक्रीज करी है. लास्ट लाइक अराउंड 10 to 15 years ago we don't have that much of RAM or ROM in our systems. Okay, so also internet users बहुत बड़े हुए हैं. So that's why the more you spend your time on the internet, like आप एक सेकंड आप इंटरनेट पे यूज करते हो, टाइम बिताते हो, the moment you are connected with the internet, the company of the devices or any application that you are using in your phone starts to suck up your data. So अब ये डेटा जो होते हैं ना, कंपनी क्यों लेती है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा. बट आपको ये जानना होगा, ये डेटा जरूरी नहीं है कि आपको कुछ नंबर्स में हो, कुछ लाइक कुछ CSV फाइल में हो. Data can be in any form. It can be images, it can be audio, it can be video. Okay, it can be your screen time of a video. आप like आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप अगर कुछ वीडियो देख रहे हैं, आप किसी वीडियो को, किसी कंटेंट को आप स्किप कर रहे हैं, उसका स्क्रीन टाइम, उसका रन टाइम, वो भी स्टोर होता है कंपनी के डेटाबेस में. अब बात ये आता कि अब बात ये आता है कि कंपनी डेटा को स्टोर करके करती क्या है. आई विल टेक अ वेरी इंट्यूटिव एग्जांपल. लेट्स सपोज यू वांट टू बाय अ वेडिंग ड्रेस. लाइक आपके घर में शादी है और आपको वेडिंग ड्रेस खरीदना है घर में, ठीक है ना? तो आप शॉप पर जाते हो, ठीक है? आप शॉप में आपको पता है कि अलग अलग वेराइटीज के कपड़े होते हैं, लाइक दे आर ट्रेडिशनल, दे आर वेस्टर्न, दे आर कैजुअल ड्रेसेस. ओके, सो आप जैसे ही जाते हो तो आपसे वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक आपको किस टाइप का ड्रेसेस चाहिए, तो आप बोलते हो कि मुझे ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए. तो वो आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस आपको रिकमेंड करते हैं, आपको वो जो वहाँ पे रखे रहते हैं वहाँ से आपको निकाल के दिखाते हैं. फिर अगर आप देखते रहते हो, फिर आपको कुछ पसंद नहीं आता है, आप उठ के जाने लगते हो, तो फिर आपको क्या करता है, वो और क्वेश्चन आपसे पूछता है, लाइक आपको किस कलर में चाहिए, किस फैब्रिक में चाहिए, आपका बजट क्या है, लाइक सो मेनी क्वेश्चन ही विल आस्क यू टू गिव यू अ रिलेटिव प्रोडक्ट टू यू. तो डेटा साइंस भी कुछ इसी तरह का है. लाइक ये जो ऑफलाइन अभी एग्जांपल मैंने बताया, इसको ऑनलाइन की तरफ कैसे शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है ना? आपको जैसे आप कोई भी नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हो, आप ओला यूज कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज कर रहे हो, आपको कुछ कंटेंट दिखाए जा रहे हैं, आप कंटेंट को उस प्लेटफॉर्म पे स्टिक रहे हो, ताकि आप स्टिक रहते हो, इसलिए आपको ऐसे कंटेंट आपको दिखाते हैं जो आपके रिलेटिव रहता है. अब वो रिलेटिव कैसे रहता है, वो आपका डेटा जो सकअप करता है उससे वो प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन लाइक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना? There are different types of recommendation system, like user based collaborative filtering method, content based filtering method. like आपका फ्रेंड आपको कोई एक कंटेंट देखा है, उसको बहुत पसंद आया, तो वो आपको भी रिकमेंड कर देता है, ठीक है? ऐसा होता है कि आप कोई वीडियो देखते हो, वो आपके फ्रेंड को भी रिकमेंड करता है. तो बेसिकली डेटा साइंस का जो मोटिव है ना, आप ऐसा समझिए कि एक मॉडल क्रिएट करता है जहां पर कंपनी का फायदा वो कैलकुलेट करने की कोशिश करता है. इट विल ट्राई टू बिल्ड अ मॉडल दैट विल गेट द डेटा. इट विल टेक द इनसाइट्स फ्रॉम इट, एंड फ्रॉम दैट इनसाइट इट विल ट्राई टू हेल्प द ऑथोरिटीज ऑफ अ कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन और किसी बिजनेस का कुछ ऐसा डिसीजन लेने में मदद करता है जो वो डिसीजन प्रॉफिट कराने जनरेट करता है. अब ये प्रॉफिट जरूरी नहीं कि पैसा क्या होता है, ये प्रॉफिट कैन बी एनीथिंग, लाइक एफिशिएंसी, रेपुटेशन, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी. तो ये तो पूरा बात हो गया डेटा साइंस का. तो डेटा साइंस जो है पूरे डेटा के अराउंड रिवॉल्व करता है और बिजनेस के अराउंड रिवॉल्व करता है. अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि डेटा साइंस अभी इतना हाइप में क्यों है. जैसा अभी हम बताएं कि डेटा साइंस ऐसा नहीं है कि अभी अभी निकला है, ठीक है ना? डेटा साइंस अराउंड 100 ईयर से एग्जिस्ट करता है. बट डेटा इतना जनरेट हो रहा है लास्ट ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स में हम लोगों ने इतना डेटा जनरेट किया, लास्ट 90 ईयर्स में हम लोगों ने उतना डेटा जनरेट नहीं किया था, ड्यू टू द कंपटीशन पावर इंक्रीज, ठीक है ना? तो इस वजह से डेटा साइंस को वन ऑफ द मोस्ट हाइप टेक्नोलॉजी बोला जाता है. अगर आप गूगल चला रहे हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, लाइक डेटा साइंस द सेक्सिएस्ट जॉब ऑफ 21st century. सो
सो व्हाई डेटा साइंस? जैसे मैंने अभी बताया कि डेटा साइंस का जो मकसद है कुछ इस तरीके से है कि आपसे डेटा लिया जा रहा है, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट से इनसाइट जनरेट किया जाता है और उन साइट से ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो आपके बिजनेस में हेल्प करता है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जोमेटो का। जोमेटो आप सबको यूज करते हो खाने बनाने के लिए, मंगाने के लिए। तो उस जोमेटो एप्लीकेशन में अलग अलग डेटा फीड होते हैं, लाइक अलग अलग रेस्टोरेंट से ऑथराइज किए रहते हैं, अलग अलग जगह से कस्टमर, अलग अलग रीजन से कस्टमर अलग अलग टाइम डेट पर प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मान लो यहाँ पर आसनसोल में एक दुकान है, रॉयल होटल। अब मैं उस डेटा के हेल्प से अगर उसको कुछ इनसाइट ऐसे इन्फॉर्मेशन दूं कि लाइक संडे को आपका दुकान में 12 बजे से 3 बजे तक बिरयानी सबसे ज्यादा बिकने वाला है, शाम को 5 बजे से शाम के 8 बजे तक चाउमीन सबसे ज्यादा बिकने वाला है, ठीक है। और मंडे को अलग प्रोडक्ट इस टाइम पे ये बिकने वाला है, ट्यूसडे को ऐसे बिकने वाला है। मैं पूरा उसको वीक का डेटा दे दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अब सोचो इस इन्फॉर्मेशन का, इस इंसाइट का वो कैसे यूज कर सकता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वो उस दिन उस प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी को ज्यादा रखेगा जिस दिन उसका डिमांड ज्यादा होने वाला है। डेटा साइंस इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग द राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर इन द राइट टाइम, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डेटा, ऑब्वियसली। अब डेटा साइंस में अलग अलग टूल्स यूज किए जाते हैं, उन टूल्स के ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक और बात बता दे रहा हूँ कि आप वेब डेवलपमेंट पढ़िएगा तो आप इंजीनियर बोला जाइएगा, ठीक है, आपको इंजीनियर बोला जाएगा। बट आप डेटा साइंस पढ़िएगा, आप डेटा साइंस पर काम कीजिएगा तो आपको डेटा साइंटिस्ट बोला जाएगा। दैट्स अनदर रीजन टू लर्न अबाउट डेटा साइंस। So the first thing that you need to learn about data science is mathematics and statistics, ठीक है ना। अब प्रोग्रामिंग क्यों नहीं, पहले ऐसा क्या है मैथमेटिक्स में? और ये मैथमेटिक्स हमको पता है, आधे लोग अभी इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा मैथमेटिक्स को देखकर। बट ये वो मैथमेटिक्स नहीं है जो हम लोग 11 12 में पढ़ कर आए हैं, जो रट कर आए हैं, एग्जाम में लिख कर आए हैं, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो आपको जब स्टैटिस्टिक्स यूज करके आप कुछ मॉडल्स बनाइएगा, ठीक है ना, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है dy बाई डी एक्स, लाइक डिफरेंशिएशन सब भी ने किया आपने 11 12 में। और इसका एक्चुअल रीजन मैक्सिमा मिनिमा से हम कैसे किसी मॉडल की एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं, किसी को डिक्रीज कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को या फिर किसी एरर को हम लोग डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, वो आपको सब इसमें पता चलेगा। सो दिस मैथमेटिक्स इज नॉट थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है आपको रट कर फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना। आप खुद फॉर्मूला डिराइव करोगे अकॉर्डिंग टू योर नीड, और आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ लाइक स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजेशन एंड ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स तो ठीक है। प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स जो है ना, डेटा साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ये डेटा विजुअलाइजेशन बहुत काम आता है। आप डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर मैं आता हूँ, ठीक है ना। अगेन द सेकंड थिंग दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर योर डेटा साइंस जर्नी विल बी प्रोग्रामिंग। अगेन प्रोग्रामिंग हर जगह काम आने वाला है, ठीक है ना। आप कोई भी टेक्नोलॉजी देख लिया, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगा ही लगेगा। लाइक जयंत ने अभी कहा था कि जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, भूखा नहीं मरोगे। सेम वे पाइथन 3 भी आप पढ़ लोगे तो आप भूखा नहीं मरोगे, ठीक है ना। पाइथन 3 यूज किया जाता है डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ओके। सो देयर आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक अलग यूज है, पर्पस है, ठीक है ना। लाइक अभी जयंत ने भी बताया कि वेब डेवलपमेंट के लिए आपको पढ़ना है तो आप जावास्क्रिप्ट पे जा सकते हो। प्रोग्रामिंग में आपको अगर पढ़ना है तो आप पाइथन 3 में जाओ। अगर आपको डेटा साइंस में पढ़ना है तो प्रोग्रामिंग पाइथन 3 चूज कर सकते हो, ठीक है ना। मशीन लर्निंग के लिए पाइथन 3 ज्यादा यूज होता है। और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लाइक जावास्क्रिप्ट से भी आप पढ़ सकते हो, बट पाइथन इतना आपको पैकेजेस प्रोवाइड कर देगा उतना आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब पाइथन आपको कितना पढ़ना है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। पाइथन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक लेवल होता है, लाइक बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, एक्सपर्ट लेवल। सो यू डोंट नो, आप लोगों को एक्सपर्ट लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को बेसिक्स पाइथन आना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को कुछ पैकेजेस वगैरह आना चाहिए, लाइक नमपाई, पांडास। आपको कुछ डेटा विजुअलाइजेशन टूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइक मैट्प्लोट्लिब, सीबॉन्ड, ये डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आइडिया होना चाहिए, लाइक आप एक एल्गोरिदम दिख रहे हो, ठीक है ना। वो एल्गोरिदम एक इनपुट पे, एक पर्टिकुलर इनपुट पे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनपुट अगर बढ़ रहा है तो उसका एफिशिएंसी कम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका एफिशिएंसी घट रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इंडस्ट्री लेवल में जैसे जैसे डेटा बढ़ता है ना, आपका एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। तो आपको डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, लाइक अभी बताया उसने, जैन ने बताया एसक्यूएल पढ़ना चाहिए, मोंगोडीबी, यहाँ पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत डेटाबेस के बारे में। अब एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, दो तरह के लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है ना। आप मोंगोडीबी भी पढ़ सकते हैं और माई एसक्यूएल भी पढ़ सकते हैं। दे आर डिफरेंट डेटाबेस लैंग्वेजेस अवेलेबल इन द मार्केट. So again, the second thing
दैट इज रिक्वायर्ड द बिग डेटा। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि डेटा जो आते हैं ना, आप समझिए कि जैसे आप इंटरनेट यूज करते हो फोन में ना, तो उस हर एक सेकंड पे आपका डेटा जनरेट होते जाता है। आप भले ही इनपुट देते नहीं हो, लेकिन वो आपसे कंपनी लेते जाता है। तो ऐसे कितने बिलियंस लोग हैं। हेलो, मैं कैमरा ऑन है क्या? नो सर, हाँ भैया ऑन आवाज है आ बट फ्रीज हो गया। जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना। तो कंटिन्यू प्लीज हाँ, कंटिन्यू। तो बिग डेटा के बारे में भी मैंने बताया कि जैसे एक यूजर से जब डेटा लिया जाता है ना, तो थोड़ा अमाउंट में लिया जाता है, बहुत अमाउंट लिया जाता है। और ऐसे यूजर्स कितने लोग हैं, बिलियंस में यूजर्स हैं, और हर टाइम पे डेटा लिया जा रहा है। और यहाँ पे यूजर जो है ना बढ़ते जा रहे, पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा है। तो ये जो डेटा है ना, छोटा मोटा डेटा नहीं, बहुत बड़ा डेटा रहता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये डेटा। अब ये डेटा का अलग अलग फॉर्म होता है, लाइक ऑडियो होता है, वीडियो होता है, ठीक है ना, अलग अलग तरह का डेटा होता है। तो इसी डेटा को नाम दे दिया गया बिग डेटा। अब इसको हैंडलिंग करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है ना। अब अलग अलग तरीके को ही हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, लाइक टेबलो, एक्सेल, हडूप, ठीक है ना। ये सब कुछ वे है, ठीक है ना। पावर बीआई भी एक तरीका है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इवन हम लोग का वर्कशॉप होगा इसके ऊपर, वहाँ पे भी पावर बीआई के ऊपर बताया जाएगा। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेटा साइंस में आप लोगों को लगेगा मशीन लर्निंग, ठीक है ना। मशीन लर्निंग इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ डेटा साइंस। बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। मशीन लर्निंग खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक ही है, ठीक है ना। इवन अपने कॉलेज में तो ये पूरा एक डिपार्टमेंट ही है, ठीक है ना। तो मशीन लर्निंग क्या है ना, आप समझिए ऐसा कि अगर मुझको अगर फैन चलाना है ना, तो मैं जाऊंगा उसको मैनुअली फैन पे क्लिक करूंगा बटन पे, तब वो फैन ऑन होगा, राइट। तो अगर मुझको मान लीजिए एक मशीन बनाना है, ठीक है ना, मैं फैन में कुछ ऐसा मशीन प्रोग्राम ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे मैं एंटर करूंगा रूम में वो फैन ऑन हो जाएगा, जैसे मैं एग्जिट करूंगा फैन ऑफ हो जाएगा। तो वो मैं क्या करूंगा, उसको उस मशीन को, उस डम्ब डिवाइस को ना एक एबिलिटी दूंगा थिंक करने का, वो लर्न करने का, कि जैसे एक पर्सन आ रहा है वो ऑन होगा, जैसे वो पर्सन जाएगा वो ऑफ होगा, ठीक है ना। मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट मेकिंग अ डम्ब डिवाइस टू मेक इट अंडरस्टैंड, टू मेक इट टेक डिसीजंस बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिक्स विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, ठीक है ना। आपको एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करना है, लाइक ये होगा तो ये करना, ये होगा तो ये करना है। डेटा जैसे जैसे इनपुट आते जाएगा, वो अपने आप मॉडल को खुद को ट्रेन करेगा, ठीक है ना। मशीन लर्निंग का पाइपलाइन कुछ ऐसे समझिए कि डेटा आता है, डेटा को क्लीन किया जाता है, लाइक डेटा क्लीन किया जाता है मतलब डेटा में कुछ इरेगुलरिटी रहता है, कुछ आउटलायर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको हटाया जाता है, उनको पाइपलाइन में ऐड किया जाता है, ठीक है, उनके ऊपर कुछ काम किया जाता है, ठीक है ना। अब वो काम ही है डेटा क्लीन, डेटा प्री प्रोसेसिंग, इसके ऊपर हम बात कर ही रहे हैं अभी। हाँ, एक्चुअली इसमें नहीं है, हाँ दूसरा में दूसरा इसके बाद इसको उस पार्ट को हम फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है ना, जो डेटा क्लीनिंग वगैरह होता है। फिर उसको एक मॉडल एल्गोरिदम में ट्रेन किया जाता है, जिसको हम लोग एक्यूरेसी को हम लोग इंक्रीज करते हैं, उसका एरर को हम लोग डिक्रीज करते हैं। अब वो एरर डिक्रीज जो होता है ना, वो बेसिकली डिफरेंशिएशन की वजह से होता है, जो अभी हम बताए तुम लोगों की अप्लाइड मैथमेटिक्स का यूज करके होता है। तो मतलब ऐसा होगा कि तुम प्रेडिक्शन आप बना रहे हो, ठीक है ना, वो 50% सही बता रहा है, लेकिन तुम डिफरेंशिएशन का यूज करके उसका एक्यूरेसी को 90-95 कर सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैथमेटिक्स का भी खुद एक पावर ही है। अब मशीन लर्निंग कितना पढ़ना, बहुत डीप नहीं पढ़ना। मशीन लर्निंग तो बताया बहुत 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 बड़ा एक टॉपिक ही है, बट ज्यादा डीप पढ़ना नहीं है। लाइक मशीन लर्निंग का मॉडल कैसे काम करता है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू नॉलेज होना, ठीक है, ठीक है ना। मॉडल मॉडल वैलिडेशन, ठीक है, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक आप किसी मॉडल को इतना ट्रेन कर देते हो, इतना ट्रेन कर देते हो कि सिर्फ उस डेटा के ऊपर ट्रेन करते हो। अगर कोई नया डेटा आता है तो उसके ऊपर वो सही प्रेडिक्शन नहीं दे पाता है, ठीक है ना, तो वो ओवर फिटिंग हो जाता है। अंडर फिटिंग भी कुछ ऐसा ही रहता है। रैंडम फॉरेस्ट और अलग अलग एग्जीबूस्ट और अलग अलग एल्गोरिथम्स यूज किए जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, मशीन लर्निंग का, ठीक है ना। मैं एक डेटा बताऊंगा तुम लोगों को, तुम उस डेटा के ऊपर एक आंसर बताना, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कि एक 10 ईयर का लड़का है, उसका सैलरी 10,000 है। एक 20 ईयर्स का लड़का है, उसका सैलरी 20,000 है। एक 30 ईयर्स का लड़का है, उसका सैलरी 30,000 है। एक 40 ईयर्स का लड़का है, उसका सैलरी 40,000 है। एक 50 ईयर्स का लड़का है, उसका सैलरी 50,000 है। अगर मैं बोलूँ कि एक 35 ईयर्स का आदमी है, ठीक है, उसका सैलरी कितना होगा? जैसा डेटा मैंने बताया तुम 5,000, लोगों को, कितना? 35,000, 35,000, 35,000. ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ 23,000 का वैल्यू कितना होगा? 23 ईयर्स का आदमी कितना उसका सैलरी हो सकता है? 23,000, 23,000। 23,000. तो तुम्हारे माइंड में पता है क्या, एक ग्राफ बना है, ठीक है ना, स्ट्रेट ग्राफ बना है, ठीक है ना। वो स्ट्रेट ग्राफ ही लीनियर रिग्रेशन कहलाता है। ये इतना सिंपल होता है कि इसका नाम ही रखा गया सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है ना। क्या हुआ, आपके माइंड में एक ग्राफ बना है जो
उस पार्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर दूसरे पैरामीटर को जज कर लेता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि उसका एज कितना होगा, उस पैरामीटर के ऊपर इसने जो प्रीवियस डेटा जो मैंने इसको ट्रेन करने के लिए दिया था उसके ऊपर उसने एक मॉडल बनाया। बेसिकली इंटरसेप्ट आपने पढ़ा भी होगा, y=mx+c, ठीक है ना। इसका इंटरसेप्ट होता है, स्कोप होता है, ठीक है ना। लीनियर अलजेब्रा में भी थोड़ा बहुत आता है, जैसे जैसे आप पैरामीटर्स बढ़ाओगे एन डायमेंशन पे बढ़ेगा तो लीनियर अलजेब्रा भी हेल्प करेगा आपको अलग अलग डायमेंशन में सॉल्व करने के लिए। लाइक अभी तो मैंने बताया सिर्फ एज और आपका सैलरी। अब जैसे जैसे पैरामीटर्स बढ़ेगा, लाइक अगर मुझको ना एक फोन प्रेडिक्शन एप्लीकेशन बनाना है तो एक फोन का प्राइस डिपेंड करता है रैम के ऊपर, रोम के ऊपर, उसका स्क्रीन साइज के ऊपर, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब उन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन करने के लिए ना आपको लीनियर अलजेब्रा लगाना पड़ेगा। जैसे y=mx+c मैंने अभी बताया, तो mx+c के प्लस y एक और पैरामीटर ऐड हो जाएगा। जितने 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 पैरामीटर्स आएंगे उतने उतने ऐड हो जाएंगे। तो आप भले ही एन डायमेंशन को आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हो, बट आप उसको विद द हेल्प ऑफ लीनियर अलजेब्रा आप उसको प्रोसेस कर पाओगे, आप उसके ऊपर मॉडल बना पाओगे, ठीक है ना। तो ये मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताया था लीनियर रिग्रेशन का। अगेन द सेकंड टॉपिक इज डीप लर्निंग, ठीक है ना। अब डीप लर्निंग के बारे में क्या बताऊं, ठीक है ना। डीप लर्निंग आप समझो ना, हमारे माइंड में जैसा हम लोग डिसीजन लेते हैं ना किसी चीज का, लाइक हम लोग बचपन में हॉट पेन को हम लोग टच करते हैं पहली बार, तो देखते हैं क्या पेन को टच करते हैं, हम लोग को बहुत गर्म लगता है ना, तो हम लोग हटा लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग हॉट पेन को देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये गर्म चीज है, इसको टच करना मतलब हार्म है, हम लोग उसका टच नेक्स्ट टाइम नहीं करते, क्योंकि हमारे माइंड में न्यूरॉन्स एक बन चुके हैं और ये वो न्यूरॉन्स के अंदर में एक इंफॉर्मेशन आ चुका है कि इस पेन को टच करने पे ना हमारा जो है हमको हार्म पहुंचेगा, ठीक है ना। तो इसी इसी तरीके से ना डीप लर्निंग जो एक फील्ड है वो क्या करता है ना, इंसान के जो न्यूरॉन्स है ना उसको रेप्लिकेट करने का ट्राई करता है। अब इंसान का जो माइंड है ना, जो इंटेलिजेंस है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस है। लाइक हम हमारे अंदर कंपटीशन पावर है, हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं, हमारे अंदर इमोशनल पावर है, ठीक है ना। हम लोग क्रिएटिव है, हम लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं। अब टू बी ऑनेस्ट किसी भी साइंटिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना कॉम्प्लेक्स बना पाएगा, ठीक है ना। इतना कॉम्प्लेक्स कोई न्यूरल नेटवर्क बना नहीं सकता है। तो हमारे लिए जो सबसे इंट्यूटिव कंप्यूटेशनल जो एक पैरामीटर होता है ना, हम लोग कंप्यूटेशनल कुछ भी हम लोग बता सकते हैं कि हाँ लाइक मेरा फोन का रैम इतना है, 4 GB रैम है, मेरे फोन का रैम इतना है, तो हो सकता है 12,000 प्राइस हो, ठीक है ना। ये कंप्यूटेशनल जो हम लोग का डिसीजन मेकिंग पावर है ना उसको रिप्लिकेट करने का साइंटिस्ट लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है, हम लोग सबसे स्मार्टेस्ट स्पीसीज है ऑन द अर्थ, ठीक है ना। तो उसका एक छोटा सा रिप्लिकेट बनाना चाह रहे हैं, उसका छोटा सा पार्ट बनाने का रिप्लिकेट करना चाह रहे हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डीप लर्निंग इज ऑल अबाउट मेकिंग इंटायर ह्यूमन माइंड। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप इमोशन नहीं डाल सकते हो। तो अब तुम लोग सोचोगे कि इसमें और मशीन लर्निंग में फर्क क्या है, ठीक है ना। अब मशीन लर्निंग में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है ना जो डीप लर्निंग उसको सॉल्व करता है, राइट। लाइक जब बहुत ज्यादा डेटा आने लगता है ना मशीन लर्निंग में, तो एक टाइम आता है कि वो अपना एक्यूरेसी को ना इंक्रीज नहीं कर सकता, उससे ज्यादा उसका एक्यूरेसी इंक्रीज हो ही नहीं पाता, चाहे कितना भी डिफरेंशिएशन लगा तो। बट डीप लर्निंग में ऐसा नहीं होता। डीप लर्निंग में ना लेयर्स होते हैं, हर एक लेयर्स में एक बायस होते हैं, नोट्स होते हैं। आप पढ़ोगे इसके ऊपर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आप लेयर्स ऐड करते जाओगे ना वैसे वैसे आपका जो है ना एक्यूरेसी इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है ना। बाय द टाइम आप ऐसा एक्यूरेसी को अचीव कर लोगे जो आप मशीन लर्निंग को आप फेल कर सकते हो। बट बहुत क्वेश्चन आता है ये कि जब डीप लर्निंग था ही तो फिर मशीन लर्निंग को क्यों यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब डीप लर्निंग का भी एक प्रॉब्लम है, लाइक बहुत ज्यादा हेवी होता है इसका मॉडल्स, मतलब जीबी में होते हैं, जीबी टीबी में होते हैं। मशीन लर्निंग का मॉडल एमबी में होते हैं, जीबी में भी हो सकते हैं। तो इसका भी एक प्रॉब्लम है। तो जाहिर सा बात है अगर मुझको नाखून काटना है तो मैं कैंची का यूज नहीं करूंगा, मैं नेल कटर का यूज करूंगा। इसलिए मशीन लर्निंग को लाइट वेट सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता है, लाइक प्रेडिक्शन एप्लीकेशंस वगैरह के लिए यूज किया जाता है। डीप लर्निंग को कहाँ यूज किया जाता है? डीप लर्निंग को यूज किया जाता है हम लोग लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सब में यूज किया जाता है, ठीक है ना। ईमेल क्लासिफिकेशन, डॉग कैट इमेज क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। आप लोग गूगल यूज करते हैं, आप लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद वही रिलेटिव कंटेंट कैसे आते हैं? बेसिकली डेटा साइंस से ये होता है। बट उसके अंदर में आप क्या करते हो, जब भी आप टेक्स्ट को आप पेस्ट करते हो ना, उस पेस्ट को वो टेक्स्ट क्या करता है, आप हर जितने भी डेटा ऑलरेडी गूगल प्लेटफॉर्म में जितने भी डेटा उनसे मैच करता है वो सबको आपको दे देता है, ठीक है ना। तो अब इसका ये भी बना एक इंजन है बर्ट, इसका नाम BERT, आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। इसके ऊपर ये पूरा गूगल का सर्च इंजन बना हुआ है और वो सर्च इन द बिहाइंड द सीन डीप लर्निंग मॉडल यूज किया जाता है। अब डीप लर्निंग कितना पढ़ना है? बहुत नहीं पढ़ना है, बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ना है फॉर द डेटा साइंस, ठीक है। क्या पढ़ना है? सिंगल न्यूरॉन पढ़ना है। हमारे शरीर में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में हम लोग जब डालते हैं तो उसको सिंगल न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है ना। उसको आप जब MLP पर आप अलग अलग न्यूरॉन्स को जब ऐड करिएगा तो उसको MLP बोलेगा, मल्टी लेट परसेप्ट्रॉन आप उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप
ऐसे करते करते आप लेयर्स बाय लेयर्स बनाते हो, आप उसको डिटेक्ट करते हो, बहुत ईजी, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है ना। क्या जरूरत है पढ़ने के लिए, एक सिंपल न्यूरॉन क्या होता है, डीप लर्निंग नेटवर्क, डीप न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में आपको पता होगा, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग यहाँ भी है। बेसिकली अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग आप कुछ ऐसे समझिए ना, जैसे मान लेते हैं कि एक दो तरह का टीचर है, ठीक है ना, एक टीचर ए, एक टीचर बी है। एक टीचर ए ना एग्जाम के लिए क्वेश्चन सबको दे दिए स्टूडेंट को, लो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, पढ़ के आ जाओ, ठीक है। और एक टीचर बी है जिसने एग्जाम के लिए इतना अच्छा पढ़ा है, इतना अच्छा पढ़ा है कि अब अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस भी अगर कुछ क्वेश्चन आए उसको ना, तो वो पढ़ लेगा, ठीक है ना। अब एग्जाम आते हैं, एग्जाम में स्टूडेंट ए ग्रुप है, स्टूडेंट बी ग्रुप है, जिसको दो अलग अलग टीचर ने पढ़ाया है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट ए को ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता है जो आउट ऑफ द सिलेबस है, जो उसके टीचर ने नहीं बताया था, तो वो फेल कर जाएगा, क्योंकि उसको वो ही पता है जो उसके टीचर ने उसको बताया है, ठीक है ना। वो हो गया ओवर फिटिंग, ठीक है ना। अब जिस टीचर को उसने अच्छे से बताया था, पढ़ाया था, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ताकि वो अनसीन डेटा के ऊपर अच्छा प्रेडिक्ट कर पाए, ठीक है ना, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उस कंडीशन को ओवर फिटिंग बोलते हैं, और इसके जस्ट वाइस वर्सा आप अंडर फिटिंग को समझ लो। अब ड्रॉप बैच नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स क्या होता है, लाइक अगर अगर मुझको क्लासिफिकेशन करना है कि एक पर्सन मेल है फीमेल है, ठीक है ना, तो बेसिकली एक मेल होता है फीमेल होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और हुआ तो फिर बाइनरी क्लासिफिकेशन या फिर टेनरी क्लासिफिकेशन हो जाएगा, क्वार्टरनरी क्लासिफिकेशन हो जाता है। आपको ये जब बिगिनर एज ए बिगिनर के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ेगा डीप लर्निंग में। अगर आप इंटरमीडिएट के लिए जाओगे तो आपको कुछ अलग अलग एल्गोरिदम्स है, लाइक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सबसे इजी यही है। इसके बाद आपको, अगर आप अपग्रेड करना है आपको, तो आपको सीरियन पढ़ना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना पड़ दिया कि मैंने अभी तक जितने भी आपको सीक्वेंस बताया ना, इस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पहले डीप लर्निंग पढ़ लिए, फिर मशीन लर्निंग पढ़ लिए, फिर ये पढ़ लिए। सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको प्रोग्रामिंग में जाना पड़ेगा, उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन टूल में जाना पड़ेगा, फिर मशीन लर्निंग में जाना पड़ेगा। मशीन लर्निंग पढ़ने के बाद आपको डीप लर्निंग पढ़ने पड़ेगा। तो डीप लर्निंग इतना कॉम्प्लेक्स है ना, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट एज कम्पेयर टू द मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आप 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाओगे डीप लर्निंग में। तो इसके बाद आप मशीन लर्निंग में आप स्विच करना। अगेन, जैसे मैंने आपको बताया था कि फीचर इंजीनियरिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फीचर इंजीनियरिंग कुछ नहीं होता, जैसे हम डेटा लाते हैं ना इंटरनेट से, तो इंटरनेट इतना बड़ा हब है ना, जहाँ पे डेटा अलग अलग फॉर्मेट में रहते हैं। तो उन डेटा को सही फॉर्मेट में लाने के लिए, ताकि आप मॉडल को ट्रेन कर, मॉडल जब ट्रेन होता है आप उसमें डेटा फीड करो, कि ना फीड करेंगे तभी डेटा सही आउटपुट सही आएगा। एक कहावत भी है कि अगर आप गार्बेज डालोगे ना एल्गोरिथम में, तो गार्बेज निकलेगा, ठीक है ना। तो अब इसके लिए बहुत सारा चीज है जो पढ़ना जरूरी है, लाइक बेसलाइन मॉडल कैसे काम करते हैं, इनकोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, फीचर एक्सट्रैक्शन सिलेक्शन, ठीक है ना। अब अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि मशीन लर्निंग में आपको फीचर इंजीनियरिंग करना पड़ता है, डीप लर्निंग में आपको फीचर इंजीनियरिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली लेयर्स बाय लेयर्स के अंदर में ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगेन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बेसिकली ये भी एक खुद में एक बहुत बड़ा डोमेन है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग तुमसे बात कर रहे हैं, तो हम हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, बंगाली में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन टू ह्यूमन हम लोग समझ सकते हैं। बट अगर एक मशीन से हमको बात करना है ना, मेरा टेक्स्ट को मशीन तक पहुंचाना है, तो मुझको ऐसे उसको इनकोड करना होगा, डिकोड करना पड़ेगा, ताकि उस मशीन को समझ पाए। तो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज जो हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है ना। अब वो लैंग्वेज तो मशीन समझ नहीं पाएगा ना, मशीन को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आता है। तो बेसिकली एनएलपी पूरा एक डोमेन ही है जो ट्राई करता है मशीन को हमारा लैंग्वेज समझाने का, ठीक है ना। अब इसके अंदर में अलग अलग टेक्निक है। अब इसका मैं एग्जांपल दूं तो प्लेगरिज्म चेक, अगर आप लोग पता होगा, कोर्सेरा का आप लोग कोर्स यूज करते हो, तो आप क्वेश्चन सबमिट करते हो ना, तो प्लेगरिज्म चेक करता है, लाइक स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट ए का असाइनमेंट मैच कर रहा है। वो कैसे मैच करता है, वो आपका लेता है टेक्स्ट को, टेक्स्ट टू टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करता है, वहां पे आपका सिमिलैरिटी रिपोर्ट निकालता है, सिमिलैरिटी एक थ्रेशोल्ड से ऊपर आ जाता है, तो आपका हो गया आपका प्लेगरिज्म डिटेक्ट। ऐसे आपका बहुत सारा टेक्निक है, ठीक है ना। इसके अंदर टेक्निक बहुत सारे हैं, ग्लोव, वर्ड टू वेक, बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वेक्टराइजेशन, टोकनाइजेशन, वर्ड एडिटिंग, टीएफ-आईडी, अब ये सब टेक्निक होते हैं ताकि हम आप वर्ड्स को हम वेक्टर में कन्वर्ट कर पाए, जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे वर्ड्स को। अब वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, टेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं, वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वेक्टर को आप एन डायमेंशन अपलोड करोगे, एन डायमेंशन आप सिमिलैरिटी रिपोर्ट निकालोगे, जिस रिपोर्ट को आप सिमिलैरिटी जब निकालोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, लाइक 70%, 30%, 50%। उसका आप थ्रेशोल्ड जो आप कंपेयर करोगे ना, 60% से ऊपर आ रहा है इसका सिमिलैरिटी, मतलब इसने कॉपी पेस्ट किया है। तो ऐसे ही होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम। अगेन, लिनक्स के बारे में तो जैन ने बता ही दिया, ठीक है ना। अब एक और बात मैं बता दूं कि लाइक हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो लाइक वर्जन क्या पे मतलब क्या है, जब हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, प्रोजेक्ट का एक वर्जन है, उसको हम अपलोड कर दिए, फिर उसके ऊपर हम कुछ अपडेट किए, चेंजेस किए, फिर उसको अपलोड कर दिए।
फिर कुछ चेंजेस किए, फिर अपलोड कर दिए। तो ऐसे में जब चेंजेस करते गए, जब लेटेस्ट वाला जो मेरा वर्जन है, अगर उसके अंदर कुछ अनस्टेबिलिटी कुछ आता है ना, अब मुझको प्रीवियस वर्जन में शिफ्ट करना होता है तो मुझको आसानी पड़ता है शिफ्ट होने में, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है, और बहुत लोग तो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट एंड गिटहब है इसका एग्जांपल, ठीक है ना। इसका ऊपर एक वर्कशॉप होगा। अगेन डोमेन नॉलेज आप कुछ ऐसे समझिए ना कि अगर मुझको एक डिजीज प्रेडिक्शन एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है ना, कि एक पर्सन को ये डिजीज है कि नहीं है। तो अब मैं तो डॉक्टर नहीं हूं ना, मैं तो एक इंजीनियर हूँ, ठीक है ना। तो अब मुझको एक डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेना पड़ेगा कि लाइक कौन सा ऐसे पैरामीटर है जिससे मैं जज कर पाऊँ कि इसे बीमारी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो वो नॉलेज जो है बेसिकली डोमेन नॉलेज हो रहता है, उसी को डोमेन नॉलेज हम कहते हैं, ठीक है ना। अब कुछ ऐसा डोमेन में हम जा रहे हैं जिसके बारे में हमको आइडिया नहीं है, तो उसके बाद आइडिया हमको थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा नहीं है डेटा साइंस से पढ़ने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं है। इतना ही बेसिक्स है, बट यही एक रोड मैप मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब इसका आपको अगर पढ़ने का मन करेगा तो आप ओपन सोर्सेस बहुत सारा आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। इंटरनेट से बड़ा लाइब्रेरी कुछ नहीं है। आप यूट्यूब पे जाओ, आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये एज ए बिगिनर के लिए ठीक है। अगर आप कंपनी में जाओगे तो आपको आपको रियल वर्ल्ड डेटा पे काम करने को मिलेगा, आपको समझ में आएगा एक एक चीज, आपको मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स का पावर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो डेटा साइंस के बारे में इतना ही है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो अगेन वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक है ओवर द इंटरनेट, ठीक है ना। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। इसके बारे में हमको कुछ बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर बता दे रहा हूँ कि हमारा माइंड जैसे अब जैसे अभी तुमको बताएं कि हमारा माइंड जैसे सोचता है ना, हम लोग को एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि हम लोग उस हिसाब से डिसीजन बना सके। लेकिन हमारा डिसीजन अलग अलग चीजों पे बेस होता है, इमोशन पे बेस होता है, ठीक है ना। हम लोग जस्टिस कर पाते हैं, हम लोग जो भी सिस्टम बनाएंगे वो इक्वालिटी कर सकता है, लेकिन ये जो सिस्टम बनेगा हम लोग बनाएंगे अपने हाथ से, वो जस्टिस नहीं कर पाएगा, वो इसके अंदर इमोशन नहीं रहता है ना। तो एक सब पार्ट हम लोग बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना, जो खुद में एक डिसीजन ले सके, ठीक है ना। इसका बहुत सारे एग्जांपल तुम लोग देखोगे, टेस्ला कार्स वगैरह जो भी है, डिसीजन लेते हैं कि गाड़ी को इस तरफ घुमाना है, इस तरफ घुमाना है, बेस्ड ऑन रोड का कैसा सिचुएशन है, ठीक है ना, जो लाइन क्या है, रोड का कैसा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमको क्या बताया, लेकिन यही सब था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल क्या है, ठीक है ना। हम लोग अभी तक लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं ना, कुछ भी वर्क कर रहे हैं ना, तो लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाता है, ठीक है ना। अगर मुझको कुछ काम करवाना है, ठीक है, तो अगर मान लो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप लोग अभी यहाँ पे आओगे सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है ना। तो सर्टिफिकेट जब मैं दूंगा तुम लोगों को, तो क्या मैं मैनुअली एक एक करके दूंगा, एक एक करके लिखूंगा सर्टिफिकेट पे, या फिर कुछ मैं एप्लीकेशन ऐसा बिल्ड करूंगा जो ऑटोमेटिकली मैप करेगा आप लोगों को, ऑलरेडी आप लोगों को दे देगा सर्टिफिकेट आके। तो हम लोग काम को आसान करने के लिए हम लोग मशीन्स बनाते हैं। अब तुम लोग सोचोगे कि हम लोग प्रोग्राम भी तो कर सकते हैं। अब प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम ये होता है ना कि जैसे जैसे नया डेटा आता है, नया नया प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, तो हमको अपना प्रोग्राम को चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग जो मॉडल्स बनाते हैं वो इस हिसाब से बनाया जाता है कि जैसे जैसे न्यू प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे जैसे न्यू डेटा आएंगे, वो उस हिसाब से अपने आप को डेवलप कर पाता है, ठीक है ना। आप लोग मूवी देखे होंगे एवेंजर्स का एज ऑफ अल्ट्रॉन, उसमें उसमें जो एज ऑफ अल्ट्रॉन रहता है, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोटोटाइप समझ लीजिए आप। अब डिफरेंस बिटवीन एआई, एमएल, डेटा साइंस एंड डीप लर्निंग, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये तो हम सब में एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप ये समझिए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आप पूरा एक यूनिवर्सल है, ठीक है ना, यूनिवर्सल ग्रुप है, उसके अंदर में सब कुछ आता है, ठीक है ना। अगर आप डीप लर्निंग पढ़ लिए, मशीन लर्निंग पढ़ लिए, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ लिए, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो डिफाइन करता है ऐसा मशीन्स बनाने का जो इंसान की तरह सोचने का कैपेबिलिटी रखता हो, ठीक है ना। मशीन लर्निंग बेसिकली वो टेक्निक है जहां पर आप ऐसे मॉडल्स बनाते हैं, ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं, जिसको आप डेटा फीड करते हो, वो डेटा फीड होने के बाद आप ऐसे एल्गोरिथम में डालते हो जो जो मैथमेटिक्स यूज करता हो, ठीक है ना। बहुत सारा एल्गोरिथम अभी आपको तुम लोगों को बताया, हम लाइक लीनियर रिग्रेशन अभी बताया तुम लोग को, जो लाइन ड्रॉ हो रहा था, उससे वो डिसीजन ले पाए, ठीक है ना, और खुद पे डेवलप हो पाए, ताकि क्या प्रॉब्लम, कुछ नया प्रॉब्लम है, कुछ नया डेटा है, कुछ नया पैरामीटर आया है, उस हिसाब से वो खुद को डेवलप कर पाए और सही इनपुट, सही प्रेडिक्शन दे, ठीक है ना। डीप लर्निंग जो है ना, वो सबसे कोर और हार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि डीप लर्निंग में ना आपको कुछ करना की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। डीप लर्निंग में आपको बस डेटा देना है, वो क्या पैरामीटर्स पे रन करेगा, ठीक है, वो क्या पैरामीटर्स पे रन करेगा, क्या फीचर इंजीनियरिंग करना है, क्या नहीं करना है, वो सब खुद पे खुद डिसाइड कर लेगा। अलग अलग लेयर्स बनते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा सा फोटो बना हुआ है, ये सब नोट्स है, और जितने जितने लेयर्स बनते जाएंगे उतना उतना मेरा एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा। अब ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसके बीच में, उसे बायस कहते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर में वेट्स रहते हैं,
उसके जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक हाउस प्रेडिक्शन एप्लीकेशन, ठीक है ना, मैं एक हाउस प्रेडिक्शन एप्लीकेशन बना रहा हूँ यूजिंग डीप लर्निंग, ठीक है ना, तो एक हाउस का जो प्राइस है ना वो किस चीज पे डिपेंड करता है, बहुत सारे पैरामीटर्स है। लाइक मैं मेरे पास अगर सिस्टम में अगर मेरे पास 5 पैरामीटर्स है, लाइक किस रोड पर है, ठीक है, उसका एरिया स्क्वायर फुट कितना है, ठीक है ना, कौन सा साल चल रहा है, ठीक है, और विराट कोहली ने कितने रन मारे हैं, ठीक है, और एक पैरामीटर मैं दे देता हूँ कि अगल बगल कितने घर है, मतलब अगल बगल सोसाइटी कैसा है, ठीक है ना, ये 5 पैरामीटर्स है। अब उन पैरामीटर्स में से कुछ पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है जो सच में डिफाइन करता है कि उस घर का प्राइस कितना होगा, और कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो यूजलेस होते हैं, लाइक विराट कोहली ने कितने रन मारे, उससे हाउस प्रेडिक्शन से मेरा क्या मतलब है, ठीक है ना। तो उसका जो वेट रहेगा बहुत पतला वेट रहेगा, उससे उसका लेना देना नहीं है। और जितने ज्यादा रिलेटिव ये पैरामीटर रहेगा, लाइक मैंने बताया स्क्वायर फुट कितना है, किस रोड पर है, ठीक है ना, अगल बगल सोसाइटी है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऑफ इलाका में नहीं है कि नहीं, वो वो सब पैरामीटर जो है इंपॉर्टेंट है, तो वो उनका जो वेट रहेगा वो मोटा वेट रहेगा, ठीक है ना, तो लाइट वेट एंड थिक वेट रहता है। ये था डीप लर्निंग के ऊपर में। अब डेटा साइंस जो है ना, डेटा साइंस जो है रिवॉल्व करता है बिजनेस के अराउंड, प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, ठीक है ना, वो हमेशा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रहता है कि प्रॉफिट कैसे करे, प्रॉफिट कैसे करे, ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ये डेटा साइंस का मोटिव रहता है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोटिव ये रहता है ना कि एक सिस्टम बनाए जो ऑटोमेट कर सके, ये ऑटोमेशन पे ध्यान देता है, डेटा साइंस ध्यान देता है बिजनेस पे, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेता है नेटफ्लिक्स का, ठीक है ना, नेटफ्लिक्स पे सब कोई मूवी वगैरह देखते होंगे, ठीक है ना। अब रिकमेंडेशन कैसा होता है वो डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड कैसा कंटेंट देख रहा है, लाइक आपका फ्रेंड और आपका अगर ये है सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, मतलब आपको जो अच्छा लगता है आप फ्रेंड को भी अच्छा लगता है, तो लेट्स सपोज आपके फ्रेंड ने एक मूवी देखा है, ठीक है ना, तो आपको भी वो मूवी रिकमेंड करेगा, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का मॉडल्स वगैरह होता है। अब डेटा साइंस क्या करता है, जितने भी यूजर्स के डेटा है, किस यूजर ने किस जॉनर के मूवी देखे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, उस टाइप के मूवी को ज्यादा रखेगा, या फिर उसको ऑथराइज करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा मूवी इस टाइप के जॉनर बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो मैं अदर जॉनर का मूवी नहीं चल ऑथराइज नहीं करवाऊंगा, दूसरे जॉनर का मूवी रखूंगा, ठीक है ना। तो डेटा साइंस बिजनेस प्रॉब्लम को रिलेटेड सॉल्व करता है, और एआई एमएल जो है वो ऑटोमेशन पे ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है ना। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, तुम देख लो, ई कॉमर्स वेबसाइट पे तुम लोग फेसबुक वगैरह यूज करते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट यूज करते हो, रिकमेंडेशन आता है, ठीक है ना। आप लोग एक प्रोडक्ट को देखते हो अमेजोन में फ्लिपकार्ट में, तो वही वही सेम एड जो है आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पे दिखाता है, इसका रीजन वही है, डेटा साइंस, ठीक है ना। तो देखो फेसबुक पे हो गया या फिर इंस्टाग्राम या कोई भी अकाउंट, ट्विटर पे देख लो, कहीं भी देख लो, वहाँ पे जो ऐड आता है ना उसी का ऐड आता है जो इसका आप प्रोडक्ट थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे अमेजोन या फेसबुक या गूगल पे देख रहे थे। तो अब बहुत सारे प्रोडक्ट है, ठीक है ना, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है। अब सब प्रोडक्ट रैंडमली दिखाने से अच्छा उन प्रोडक्ट को दिखाया जाए जिनसे आप ज्यादा रिलेटिव हो, ठीक है ना। रिलेटिव कैसे पता चलेगा, हो सकता है कि मैं प्रोडक्ट लेने वाला था किसी काम पे, मैं भूल गया लेना, तो हमको बाद में याद दिला देगा, तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है ना वो खरीदने का, प्रॉफिट। तो डेटा साइंस जो है ना उसका एक स्कैरी साइड भी है, लेकिन स्कैरी साइड हम नहीं बताएंगे फिलहाल। तो वो प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में रहता है, ठीक है ना। गेमिंग में यूज होता है, ईमेल फिल्टरिंग में यूज होता है। आपका आप देखिए गूगल खोल के तो आपको स्पैम दिखाएगा एक सेक्शन, वहाँ पे जो भी स्पैम वगैरह रहता है वो फिल्टरिंग करता है, वो कंटेंट के ऊपर जज करता है। इसके अंदर में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज किया जाता है, ठीक है ना, कि कैसा है, जैसे मान लेते हैं गेट 100% ऑफ दिस, ये गेट आईफोन, ऐसा ऐसा कुछ टॉप, ऐसा कुछ वर्ड देखेगा तो उसको स्पैम करके क्लासिफाई कर देगा, ठीक है ना। इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है ना, सिक्योरिटी में यूज किया जाता है, ऑटोनोमस व्हीकल में यूज किया जाता है, टेस्ला कार्स में वगैरह यूज किया जाता है, होम्स में यूज किया जाता है, अभी हम फैन का एग्जांपल दिए तुम लोगों को, ठीक है ना। स्मार्टफोन्स में यूज किया जाता है, लाइक सीरीज है, कॉटोना है, ठीक है ना, एलेक्सा भी है। चैटबॉट्स में यूज किया जाता है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम में यूज किया जाता है, लाइक डिजीज प्रिडिक्शन एप्लीकेशन बनाया जाता है इसके ऊपर। सोशल मीडिया में तो बहुत हेवली यूज किया जाता है, मतलब इतना हेवली यूज किया जाता है कि इसकी वजह से राइट्स भी हो जाते हैं कभी कभी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा करियर है, अब ये है कि नहीं इसका तो तुम लोग को देखना है कि नहीं, लेकिन ये बता बता दे रहा हूँ कि एआई पढ़ने के बाद तुम लोग डेटा साइंस में भी जॉब कर सकते हो, कहीं भी जॉब कर सकते हो, ठीक है ना। बिग डेटा इंजीनियर बन सकते हो, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर बन सकते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, ठीक है ना। और इसका जॉब जो है ना इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि डेटा बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा है, तो डेटा भी बढ़ेगा, और हर कंपनी को चाहिए कि एक अच्छा एआई इंजीनियर चाहिए, अच्छा डेटा साइंटिस्ट भी चाहिए, कि ना। अब देखो यहाँ पे रोड मैप हम बताए हुए हैं, अब रोड मैप में तुम गौर करो कि डेटा साइंटिस्ट और एआईएमएल का ऑलमोस्ट सेम ही रोड मैप है, क्योंकि
पर्पस सिर्फ अलग है। डेटा साइंटिस्ट का पर्पस रहता है बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बिजनेस में प्रॉफिट करना, और एआईएमएल का इंजीनियर, एआईएमएल इंजीनियर का गोल रहता है कि ऐसा ऑटोनोमस सिस्टम बनाने का जो एक यूजर का एक्सपीरियंस को बढ़ा सके, बढ़िया बना सके, ठीक है ना, एक यूजर को उनके प्लेटफॉर्म पे ना स्टिक करा सके, ज्यादा देर तक उनको टाइम दे सके। जितना ज्यादा आप टाइम दोगे किसी प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म पे ना उनका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा। ये अब क्या क्या पढ़ना है, अब ये सीक्वेंस को आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। हम बहुत लोग को देखे, जूनियर्स लोग शायद पढ़े रहे, जो स्टार्ट करते हैं डीप लर्निंग से, डीप लर्निंग बहुत अच्छा लग रहा पढ़ने में, डीप लर्निंग स्टार्ट करते हैं, 2 दिन बाद छोड़ देते हैं पढ़ना डेटा साइंस, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं पढ़ना है, सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, लाइक मैथमेटिक्स पढ़ना है, प्रोग्रामिंग पढ़ना है, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग में पाइथन लैंग्वेज हम बता दी तुम लोग को पढ़ना है, डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कैसे मैनेज किया जाता है, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, मोंगो डीबी, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस है तुम लोग पढ़ सकते हो। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से बहुत सारे, जैसे हम तुमको अभी एग्जांपल दिए लीनियर रिग्रेशन का, अलग अलग बहुत सारे और एग्जांपल है, लॉजिस्टिक रैंडम फॉरेस्ट, अलग अलग है। मशीन लर्निंग ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ना है, लेकिन जो भी पढ़ना है ना उसको थियोरेटिकली नहीं पढ़ना है, उसको प्रैक्टिकली पढ़ना है, आपको रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन करना है, आपको छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाना है, ठीक है ना। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बाद आपको थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग का थोड़ा टेक्निक आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे आप पाइपलाइन बना रहे हो, ठीक है ना। एक पाइपलाइन क्रिएट होता है कि आप मॉडल को ला रहे हो, एक वेबसाइट से फेच कर रहे हो, वहाँ आप उसको क्लीन करो, आउटलायर्स को हटा रहे हो, जितने भी प्रॉब्लम्स के अंदर हटा रहे हो। लाइक मेरे पास अगर एक डेटा है, लाइक हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, ठीक है ना, तो अब किसी का हाइट 170 सेंटीमीटर है, किसी का 160, किसी का 150 है, अगर किसी का हाइट अगर लाइक 1.2 हो गया, ठीक है, 1.3 लिखा हुआ है, तो ये डेटा बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है ना, बहुत देख हमारे पास जितना भी डेटा 170 160 इस रेंज में है, और ये डेटा 1.5 1.6 ऐसे है, तो इस इनसिग्निफिकेंट डेटा को ही आउटलायर कहते हैं, ठीक है ना। तो इन आउटलायर डेटा को कैसे हैंडल करना है, मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है, मीन मीडियन मोड कैसे काम करते हैं। अब हम लोग मीन मीडियन मोड सब पढ़े हुए हैं, लेकिन इनका एक्चुअल रीजन क्या होता है, मीडियन का मीन के ऊपर क्या फायदा होता है, वो हम लोग अभी पढ़े नहीं है। तो अब जब ये पढ़ोगे आप लोगों को समझ में आएगा कि मीडियन कितना हेल्प करता है। डीप लर्निंग थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ओवरव्यू जस्ट लेना है, मॉडल कैसे काम करते हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकली देखना होगा। डेटा विजुअलाइजेशन टूल आपको थोड़ा बहुत देखना होगा, लाइक अगर मेरे पास एक कंपनी का डेटा है, उसका उसका कस्टमर नेम, कस्टमर डेट, कस्टमर किस डेट पे ऑर्डर किया है, कितना ऑर्डर किया, क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, किस जगह से ऑर्डर किया, ऐसे सीएसवी में मेरे पास डेटा है मिलियन बिलियंस रोज में। अगर मुझको विजुअलाइज करना है तो मुझको अलग अलग टूल्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स आते हैं, लाइक पावर बीआई, टैबलो यूज कर सकते हो तुम लोग। क्लाउड प्लेटफॉर्म पे यूज आप लोग कर सकते हो, क्लाउड इसके ऊपर हम बात करेंगे। बिग डेटा टूल्स लाइक स्पार्चे, हडूप, ये वो चीजें जो आप लोग अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप ये अगर करोगे तो आपको तो पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा एडब्ल्यूएस में, थोड़ा सा आपको ये फ्री में आप पढ़ नहीं सकते, थोड़ा आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये आप कंपनी में जाने के बाद ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना जो ऊपर में मैंने बताया आप फ्री में पढ़ सकते हो इंटरनेट पे, ठीक है ना। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है, ठीक है ना, इसके ऊपर हम लोग सोच रहे थे कि इसको अलग से एक्सप्लेन किया जाए, बट इसमें हम बता देते हैं। जैसे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग, अब तुम लोग को लगता है कि क्लाउड क्या, बादल के ऊपर हम कंप्यूटिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग जैसे इंटरनेट यूज करते थे ना, बहुत पहले हम लोग जाते थे साइबर कैफे में, 10 रुपए देते थे, 1 घंटा इंटरनेट यूज करते थे, ठीक है ना। आप समझ लो कि इसी तरीके से मैं भाड़े पे इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, रैम यूज कर रहा हूँ, स्टोरेज यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं किसी और के सिस्टम को मैं एक्वायर करके कुछ देर के लिए यूज कर रहा हूँ, पे एज यू गो सर्विस का इसे कहते हैं, ठीक है ना। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, AWS है, एज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, जीसीपी क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मुझको अगर डेटा के ऊपर काम करना है, वो डेटा का साइज ही 50 GB रैम, और मेरे कंप्यूटर में 12 GB रैम है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, 50 GB का रैम लगाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने 50 GB का रैम लगा भी दिया, नेक्स्ट डेटा आया, लाइक नेक्स्ट डेटा मेरे पास आया 500 GB का, ठीक है ना। बिग डेटा ऐसे ही होता है, जीबी टीबी में होता है, ठीक है ना। तो क्या मैं रैम लगाते जाऊंगा, हम इतना इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे, जब तक मेरा काम है उस टाइम पे हम एक रिसोर्स को हम एलोकेट कर ले अपने सिस्टम में, उसको हम यूज करें, ठीक है ना। जब मेरा काम हो जाएगा, बस हो गया मेरा काम, जितना मैंने यूज किया मैंने बस मुझको बस इतना ही पैसा देना है, ठीक है ना। मुझको पूरा सिस्टम नहीं अपने ऊपर में रखना है, और ये बहुत स्मार्ट टेक्निक होता है काम करने का। अब क्लाउड कंप्यूटिंग आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, इंस्टेंस सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, क्लाउड सर्विस मॉडल्स वगैरह तो आपको पढ़ना होगा, EC2 इंस्टेंसेस पढ़ना पड़ेगा, स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। नेटवर्किंग कैसे होता है, क्लाउड वॉच क्या होता है, और बजट कैसे सेट किया जाता है ताकि आपका बिल नहीं आए, इसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। बिल का अभी मैंने आपको बताया कि बिल ना है, तो अब आप लोगों को ना एक्चुअली आप जाओगे ना AWS पे तो आपको पैसा लगता है, ठीक है ना। बट 1 साल के लिए फ्री ट्रायल भी होता है, लेकिन आप जैसे किसी सर्विसेज को आप उसके लिमिट से फ्री लिमिट से ज्यादा यूज करने लोगे ना, तो आपको बिल आता है, ठीक है ना। तो उस बिल से बचने के लिए आपको
ये लगाना पड़ेगा आपको, क्लाउड वॉच, और बजट सेट करना पड़ेगा। बस इतना ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है ना। अब ज्यादा कुछ पढ़ना की जरूरत है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत, बट जो हम बताए ना कि थ्योरेटिकली ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल पढ़ना है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन हर चीज का करना है, ठीक है। तो ठीक है, बस इतना ही। ओवर टू यू अर्गो। थैंक यू भैया, बहुत इंटरेक्टिव सेशन था, होपफुली ये हम लोग को हेल्प करे। अब मैं बुलाना चाहूँगा कमरान हसन भैया को अपना प्रेजेंटेशन के साथ, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी रहेगा। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस पॉपअप हो रहे थे, तो अगर जिनको क्वेश्चंस है उनके लिए एक डेडिकेटेड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन, तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। कमरान भैया प्लीज। हेलो, हेलो, Yeah, am I Kamran audible audible. to you? Okay, okay, okay. Hello. Yeah, please confirm I am audible. And Yes, audible, audible. okay, okay, thanks. Proceed, So Kamal. yeah, so hello everyone, very good evening to everyone. So we'll start with the topic that is called blockchain, right? My screen is visible. Yes, Yes. visible. Okay, thanks for your feedback. Okay, now let's begin. Hey, hold on for a while, just for few seconds, please. Hello. Yeah, sorry for the delay. Actually, there was a little bit outside noise from the window, so I was closing the window. So my screen is visible. You guys can see the blockchain. Yes, yes, continue. Okay, fine. So hello everyone. So at first, I would like to talk you about what you know about like blockchain. Have you guys heard about it? Anything, whatever you know, you can just share. What is blockchain? Whatever intuition you have in your mind. Anyone? Okay, so now I will explain. Okay, not blockchain, but at least you guys have heard about Bitcoin, right? या भैया। Cryptocurrency, Bitcoin. So what you know about it? What is Bitcoin and what is cryptocurrency? भैया एक डिजिटल करेंसी है। Okay, anyone else? What it is? Okay, okay, okay. So no idea. Okay, no, no, not a problem. You guys are here to learn about it. Your 4-year career are just ahead to learn things about it. So what is blockchain? So blockchain is a technology, right? It's a new field, and based on blockchain, the Bitcoin
is developed. Okay, so blockchain is a technology that can be implemented in a various fields. It can be implemented in medical fields as well as it can be implemented in economic. That is the one example is Bitcoin, another one is Ethereum. So these are the transaction based on. So I'll begin with the blockchain, right? So what is blockchain? So blockchain is basically based on some before starting the blockchain, what you need to learn. So you need to start with programming languages. So these programming languages are like anyone you can just pick, like Java, C++, or Python, so that you gain some OOPS concept, that is object oriented programming, because you need it to develop a smart contract and decentralized apps. Okay, so you need to learn about all those stuffs. So at first you need a bit of programming language, anyone you prefer, like anyone object oriented, Python or Java or C++. So after that, what you need to understand some of the data structure and algorithms. Okay, after that, what you need, the database and networking. Okay, so database and networking are pretty much required in all those fields, like whatever it is. If you're talking about web development, you're talking about data science, you're talking about anything, means you need to store the data na. So whenever you need to store the data, you need data science. So you need database, sorry. So you need database. Okay, so after that, the most important thing that involve in what you call the blockchain is cryptography. So what cryptography is? So you guys heard about like what is hashing? You know what is hashing? Anyone, any explanation what is hashing? Yes or no, anything? You guys can unmute and just say. नो भैया. Okay, so do you know what's encryption? I think you have heard about it, encryption. हाँ भैया, कुछ डेटा को Yes. Okay, सीक्रेटली कुछ yeah, टाइम मतलब. transmitting the data in a certain way that if it get it is breached during the transmission, so no one will be able to decrypt it. So that is like so that is called encryption. So hashing is something related to encryption, not exactly. I will show you, definitely I will show you with relevant examples. So what it is. Okay, so at first I will start with hashing. So I think so please confirm once I have opened a new page, it is visible. Okay. Yes, भैया. Yes, Okay, it is thanks, visible. thanks. So what is hashing? So you guys have seen that hash word in some payment gateways. It is clearly visible there, like your payment, something related to that. Like whenever you make payments now in the payment portal, you will see it is encrypted with 256 128-bit hashing. It's something like that, I think, if you remember. So what is hashing now? Hashing is something that when you take a certain amount of data and convert it into a certain length of a string, okay, irrelevant of the input data. Irrelevant of the input data means the input I am going to give inside my data. I'm not going to care about like the data should be of a certain length. For example, this is the data. Okay, if I write like hello. Okay, so as soon as I write this hello world here, so you guys can see that this hash value, it's going to change. Like if even if I make a small change like this, just a small, just adding a full stop, it will change completely, right? Just focus on the initial, like it's A591 A6. Just okay, and I'm going to write add a full stop, right? So after adding a full stop, it is completely changed. You guys can see. Yes, if you can just reply. Yes. Yeah, so Yes, this is it is what we completely. yeah, what we call hashing. So hash is something like that. We take certain data and do certain like apply certain algorithm on it and convert it into a certain form that and that form is irreversible. Means if I share this to you,
if I share this to you, you will not be able to just render it back to that it is hello world full stop. Okay, so it is rendered from hello world, and if you just hash this value, so it will give you this value, right? So if I send you this value now, you guys will not able to just get back to this the initial value of the input. Okay, so I think you guys are understanding what I'm saying. It is a irreversible. Okay, any reply? Just give audio feedback now, so that I can proceed further smoothly. Yes, Hello. भैया. Yeah. Yes. So this is what we can see. So and I also said that it is irrelevant of the size. So for example, I am just taking a long string. So you guys are saying I am adding long values, but the hash is just the length of the hash value is not changing. It's just inside these limits. So if I just keep adding more values like this, okay, I have added multiple lines. So I have added a lot of lines. Okay, so but still the data is in this way. Okay, still the data is in this way, and just even at this point, if I change, like if I add a certain, like this thing, just a small change, and this will completely change the value. Okay, just a small change will be able to completely alter this hash code. So this is what hashing is just converting a data into a certain string of a certain length. Okay, so this is called hashing. So in cryptography, it is heavily involved in the thing that is called cryptography. So just proceed further. So understand the basics. So once you will get done with the prerequisite, I already told you, you need to understand a little bit of any object oriented programming language paradigm. And apart from that, what you need a little bit of data structure and algorithm. Then you can proceed with this thing. Okay, so after understanding the basic, so okay, then it is in the initial thing is like cryptography. So this is crypto wait. Okay, now this screen, in this screen you will see like this is block. So it is much made Kamran, into, yes. Kamran, can you increase the size of your page? Yeah, sure, sir. Zoom, Yeah, zoom in, zoom in. I think now it Little bit. is Yeah. visible. Yes, Okay, yes. okay, okay, okay. Yeah. So now you can see like this is the block. Okay, and this is the data, and this is the block value. So if I add certain data to it, like this, hello. Okay. So you guys can see this is a certain hash value, and this hash value is created depending on this nonce. Okay, this value and this the block. So as soon as I just mine it now, so it will generate multiple hashes. Okay, and this is the exact mine that we used to hear about the Bitcoin. Okay, whenever you make a transaction in the blockchain, okay, you need to do the mining thing, because if you don't mine now, then the transaction will be very easy. But in case of like Bitcoin, it is about profit. So there are certain concept why this mining step is added. So I'll explain, not completely, but a bit. So let's click on mine. So you can see one thing, that this nonce value has been changed. Okay, and in the initial of this hash value, these 4 zeros are added. Okay, just I will just change it again. Okay, so now if I again mine, just take a snapshot of this value in your mind. Okay, and just see this. This is the current hash value, and hash value, how hash value is calculated. This data is something, it is added with this, and then generated a hash value. So this is the hash value, and whenever I make changes here or here, the hash value will change. Just see, if I add certain things here, the hash value keep changing. So changing these value will change the hash. Okay, so this is a data. So if I'm going to mine it now, just, so what this is doing internally, it is going to try with different nonce value,
and wait until it get a hash value starting with 4 zeros, right? So this is the step of mining. So it is not the exact step of mining that is involved in Bitcoin, like people make money with mining Bitcoin. It is not the exact, but it is somewhere a demonstration kind of thing. Okay, so just see, if I change this by this, like small changes will change the hash value. So what is mining? So mining is basically just taking this extra value and changing it until or unless if I get some hash value starting with 4 zeros. This is the logic based on this specific website. It is not the logic of like Bitcoin. Okay, Bitcoin mining is the logics or the final condition is or the stopping condition. It's a iterative process, like until or unless I gave the I got the expected hash value. So this is called like a certain block. Okay, and a certain block can store, and I will come to it. I will come to it why these things are important to understand blockchain. Because with the blockchain now, yeah, one more thing I need to discuss. Like if you upload for example, almost everyone use Facebook, Google, Facebook, Instagram, WhatsApp. So if you just send a image in WhatsApp or upload a image in Facebook, right? And you have deleted it from your mobile phone. So where it is stored now? Any reply? Like if you have uploaded a photo in your Facebook profile, right? So it is stored in where it is stored, the profile photo that you have uploaded. It's an easy guess. It Just is say saved in a yeah, Facebook The server. server. Yeah, server, the mm, Facebook server. Okay, it is saved in so February. yeah, so who is the owner of Facebook server? Obviously Facebook. Who is maintaining that server, right? So if I say, like, if you uploading your content to YouTube, Instagram, so who is the owner of that? The company owns that server. So who is the owner of your data? Okay, it's why, like, the future is about blockchain. A lot of people say the blockchain is the new, like, thing that provide you the actual what you say, the anonymity, actual anonymity. So I will cover these topics, what how it is going to provide with this simple step. The first thing that I talked about, it is the hash values. After that I'm talking about this block. So your data is stored in a certain machine. So just assume one thing. The if the person that the one who owns that machine can do anything with your data, maybe I'm not saying that they will do or they do, but what I'm saying, maybe they are the owner. If they wish, they can shut down the server or delete your data from there. It's because it's solely like it's stored there. Okay, so your data is it's in the responsibility of someone else. Okay, so blockchain also solves this problem as well. So and one thing that is also like possible, like just assume a certain uh, a page of social media page. I'll not name something. So a social media page, okay, and in that social media page you posted something, right? You posted up a statement of 3 lines. Okay, so is it possible to change that 3 lines by the owner of the page? You guys have idea about it? Like if the owner wants, then they can change those 3 lines. Anyone? Yes, Bhaiya, they can Yeah, they can also they can change change. because it's stored in their database now. They can just Yes, change it, Bhaiya. and Yes. yeah, they can change it. But how to prevent these kinds of things? Like they are the owner of the data, your data. Okay, but the data is yours. So for removing this the monopoly, you can say, the monopoly with the data, the blockchain is involved. Okay, so like your post, for example, you posted something, it is directly stored in the but the case for password is a little bit different. Password values are hashed. Okay, like for example, my password is like my password. Okay, my password is my password 123. So this is my password. I am in a certain social media site. Okay, so this is my password, and I stored in their database. So what it is, what the system does, it just convert that this password. Okay, this password is will be converted to a hash value, and this hash value will be stored in their database. Okay, so if you just type this value now, so this means even they try, they will not just guess what you entered, means this one, because it is irreversible. So whenever
you just give the, you will get the same. Whenever you give, you will get the same output whenever you. So this is how the password is stored. It's stored in a hash value. But in social media post, a message, for example, like hi there, it's a message. Okay, it's a message. So if you store it like in hash format na, then no one will be able to see it, because it's a single direction. So everything can't be put in like hashed form. Okay, so it could be encrypted, and they do a lot of things, but they are not 100% like foolproof plan. Okay, your data is in their hand, so they can do whatever they wish. Okay, so they can change it, but the blockchain give you the solution of all these stuffs. Okay, so wait, this is a block. So so one block contains may contain a certain transaction could be of like it could be a type of data. Okay, like you send me a certain data, you send a certain post. Okay, it could be called as transaction. And if it is the context of economy, like in case of Bitcoin, it's the transaction of money, and the currency is Bitcoin. Okay, so the data could be anything. For example, I posted, okay, like I posted this thing, uh, hello everyone. Okay, I posted these things. Okay, after that my friend has posted like my friend posted this. Okay, so after that my another friend posted something else. So it could contain a lot of data in this. Okay, so after that it will be generated a specific hash value. Okay, this is starting with 000. So but how I'm going to just preserve this hash value, like it could not be edited by someone. So the chain is here. So block, what a block is a storage of data. Okay, and a hash value is associated with that block, the specific block, and that specific block will generate a hash value. And what is chain? Like if you merge that multiple block in a form of chain, then it is called the blockchain. Okay, so now let's move further. So these are the certain blocks. Okay, this is block 1, block 2, block 3. So like I have sent a message to someone. Okay, to someone like, and the message goes like this. Okay, this is the message. So after that it has been mined. Okay, so after mining you will generate a specific hash value, right? You guys are getting what I'm saying? If you have a question you can ask, like if you have any question you can ask. भैया ये क्या आपका खुद का बनाया हुआ वेबसाइट No, है? it's not mine website. It's made by some Anders Braunworth. It's an amazing website. I when I was exploring blockchain, I learned it from that. So you can, yeah, I can share this to you, so that if you wish you can just explore it. Okay, and yeah, one more thing, like if you wish, now you can just unmute and say anything, because when I am presenting, the chat window is not visible to me. Okay, so if you wish to ask something, just interrupt and ask. Okay, you are encouraged to do this. So now you can see the hash value is created. Okay, now user one, this is a user one. Okay, and it send a message to user two. Okay, it send a message to user two, and message is, I will give you $1,000. Okay, this is the message. Okay, so now you can see that this is the previous hash, because this is the first block in the blockchain, in the chain of the block. So its previous value is 0000, and it has some data. Okay, and it has some nonce value. Okay, it's a variable, and it keep changing until or unless I reach this situation, a hash value starting with a certain parameter. It could be it's depend on the developer. It could be like 4 starting with 40, starting with 4x, starting with 4y. It could be anything. So that hash value is forwarded to the next block. You can see, yeah, just look at this, just look at this.
Say just reply if you are getting what I'm saying. This hash value is forwarded to this block. So the previous block of the previous hash value of this block is this one, right? Just reply Yes, yes. भैया. Okay, Yes, so you भैया. can see, so the hash the previous hash value, so what like it is now read. Okay, if I mine this now, the hash value will change and this nonce will change. Okay, this nonce and this hash value will change. So it will take time. It depends, actually it depends at the data, that how much time it will take to come to a certain hash value. Okay, so like you cannot predict that it will take 10 minutes or 10, it's unpredictable. Okay, so now you can see this is also a mind block. So in this block, the block 3, for example, a user 4 sent a message. Okay, sent a message to user 5. Okay, and the message is that I received like $500. Okay, he told that I received $500. Okay, so if I mine this, okay, it's now a blockchain of having 3 blocks, right? So what is the utility here now? When I just change this value, for example, he just sent this message in a website that is owned by the user one. That user one owns that website. Okay, and now user one can edit it as like as if someone owns that specific, so it is possible. Okay, and it depends on the architecture, like how tough it is to change those things. Those message it is encrypted or not, in in the encryption a lot of things are involved. So these all are just exist in blockchain as well. So just if I change this value now, just change, anyone can predict, like if I change this value, what will happen? Just say anyone, if I change this value, this data, Hash will change. hash will change, definitely hash will change. So if I change this value now, so hash will change, and definitely it will not be going to start with 000. Okay, because if you just change it, it will completely change. Okay, and this hash value is also given to it is forwarded to this block, if I'm not wrong, just confirm please. Yes, भैया. Yeah, so it is forwarded to this. So this hash value will change, and it is forwarded to this one. So this will also change, and after if as soon as this hash value change, so if I hash this data, this nonce with this hash value, and I generated this. So what I already told you, if you change it a little bit, the hash values will be going to completely change. So as this hash value changes, then it will reflect what it will reflect. This hash value will be, just say anyone, this hash value will be, Different. yeah, this it will change to a certain value. So this is how blockchain like preserve your like if you do something on it and it is stored in that block, or the chain of that block. So if you just change it in a certain way now, it will going to break everything. Like this, if I do this, okay, so if I do this, like you can see this hash value is changed, and as this hash value is changed, you can see this is also changed, and this one. Okay, so like it is changed. So and one more thing is that, so if I am having that chain, then what I can do to just make it fixed, then I can again mine it from this location. Okay, then mine it from this location. Okay, so now, yeah, it is now fixed. Okay, this is the solution. But in the real life, it is distributed. Okay, it is distributed in multiple peers. Okay, this is peer 1, peer A, B, C, and it is not like one or two peers. It is a distributed numbers of lakhs numbers. For example, Bitcoin. So Bitcoin transaction is not as and the blockchain is not maintained in a certain like in a certain server or certain system. It is maintained across a huge, and
even you can participate in it. Just you need to download a full node server. Okay, full node server is something like that, that contains the whole data of the blockchain. And a normal server, like a mining server, is that it will do the mining step, because here the mining step is very easy, but in case of blockchain it will consume a lot of resources and a lot of time. Okay, so a lot of servers are there that specifically mines, and as they mine, they get a certain amount. Like if I am doing the transaction, for example, if I have shown you, like in case of message as well as, and in case of transaction. So from that transaction, a certain fees is transferred, because otherwise no one will mind, na? If I am not, well, just I will, why I will waste the resources, electricity, and it will take a huge time. You guys can see the GPU costs are very high these days. You know why it is high? It's not for like people doesn't play game, that's why it is really high. It is because of that mining process involves a lot of parallel operation. Okay, because here you are getting the hash value very quickly and very easily. And but in case of the what you call in case of actual deployment, the Bitcoin, so it take a lot of time, a lot of resources. And what GPU can do a parallel processing very easily, because they are trained to render the games. The game are the 3D environment, and they are trained to render those things. So that thing that you see there, it is just the rendering power. So what the software does, it utilize that rendering power of that GPU to process the calculate this nonce. Okay, to generate the proper hash value. As soon as the hash value is calculated now, it is sent to a centralized peer. Okay, this is peer. Okay, or node, you can say. Okay, and there are multiple peers, not of one or two peers. So there are multiple, a lot of peers, like thousand lakhs number of peers are there. Okay, and those peers are maintain those records. So what what someone can do, I can own one server, two server, 3,000. Not like I can just have the lakhs of server, because it is completely distributed. Means every system has a copy of the transaction. So if I try to make changes or make the changes in this data, so I can change in one server, two server. I cannot change the whole like whole bunch of server. Okay, because they all are synced together. So in such a way, so that if I make changes in a certain node, it will going to completely get corrupted. And what other peers will do, other peer will just check it, like where the data is connected, and they will be what they are going to do, they will simply discard it, right? So just give a feedback from your side, like what you have understood till now about the blockchain. Any feedback? Hello, hello, am I audible? Yes. Yes, May, भैया, ये audible. may only one blockchain will be trusted. Yeah, only one blockchain will be trusted. So these are the simple, like a lot of more things are involved if you are just going to like involve the economy with it. It is the basically blockchain is this, the data, the storing data in a certain way that it cannot be like it cannot be corrupted. So the Bitcoin is something that utilizes this technology. Ethereum is also that. Okay, Ethereum is also that. Apart in Ethereum, a new thing is for learning Ethereum, I will suggest something. You can go for a free code camp. There are a lot of videos are on blockchain. Apart from that, what you can do, there is a language called Solidity. It's a famous language. Apart from that, a lot of languages are there. So like smart contract and distributed application, DApps. Okay, so these two things are very important. So smart contract, what the smart contract means, smart contract is it is a contract, okay, between two parties, and that will be going to executed. Okay, and if it is stored in the chain, okay now. So if the architecture is like blockchain is the base architecture. Small edits are there, like in Ethereum smart contracts are there. In Bitcoin there is no concept for smart contracts. So smart contracts are something that like that is a contract between two persons, and as per certain condition that will be going to execute it. So if the contract has been made, if I try to just revoke that contract, now it is not possible. Means the only thing that is possible with that smart contract is I have to shut down all the servers across the globe,
and it's in million. I cannot stop all the servers because it is open source. Anyone can just download the files and start their own node. Okay, so smart contract is and it will going, it is stored, and a lot of things are there like a smart contract, how a smart contract fetch the data. For example, I have made a contract with a certain person, and that contract says that if the temperature will be if the temperature is higher than 35 degree tomorrow, then a certain amount of money will be debited from my account to your account. Okay, so this is a smart contract, and you cannot stop this. If it is made once, now you cannot stop this from happening if the temperature goes beyond 35. It's just an example. A lot of different applications are there. In medical sector, blockchain is also used. Okay, in medical sectors, and one more thing, like how a user is verified. Now there's a concept of public key and private key. So we are running out of time, so I don't think we are I think it is possible to explain each and every concept right now. So I will just touch it a little bit. So what is yeah, we will be organizing workshops soon if we get time, definitely. So what is public key and private key? Public key is something like if I need like there is a two keys. Okay, and it is there in WhatsApp as well. You will see the encryption. So encryption is does in certain way. So if I am sending a message to you, I need your public key. Okay, I need your public key, and that is public, so I can have, and anyone can have your public key. So I have taken your public key and the message that I am trying to send to you. Okay, I merge those things and do some magic. It's not a magic, it's a function, definitely. So I do some magic and generate something and send it to you. Okay, so you need that private key that you have to decrypt that message. Okay, you need that private key. Your public key and private key has some like a connection, so the message that is encrypted with the public key can only be decrypted with that private key, right? So in the WhatsApp, it works like that. Even you have seen like when you changed I have sent you a message, your WhatsApp is off, you reinstalled WhatsApp. Okay, so now you have assigned a new public key and private key. Okay, and the message what where when I have sent that message, I have sent the message as per your old public key. So when it is arrived to you now, I have sent it as per your old public key. So when it is arrived now, but now your private key is updated. Okay, so with like that private key is not capable of decrypting that message. Okay, so what WhatsApp does, then it again tell me to just send that encrypted form with your new public key. That why it will take some time. Sometime it happens and sometimes it's failed, because if I have deleted the message from my side, then there is no method to like just generate it again. Okay, so this is how it works. So I think you have understood the public key and private key. Yes, भैया. Yeah, so Yes, yes. similarly in the blockchain na, if I just sending a transaction, if I am sending a transaction, so that transaction should involve the public key and private key, so that if it could be verified. Yeah, one more thing is that if I am sending a message to you with your public key na, then it is confirmed that I am in the message is intended for you. I have sent that message to specifically for you. I'm not sending it to a random person, like anyone can decrypt it. It is just made for you, and see that message. So this is called the cryptography, or the public private key, RSA. It is also called RSA as well. So in case of blockchain, now whenever a request is submitted to the node, now it is verified from that public key and private key that it is coming from the actual account holder, because it is generally open. You can, and even like in the blockchain, the transaction cannot be tracked. Okay, yes, it is partially true and partially not true. So actually in case of blockchain, you can see all the transaction that is happening in every seconds. Okay, it's not like that it cannot be tracked, but the only thing that you can see is the amount of transaction. Okay, and the transaction is going from a certain account to a certain account, and their key configuration, the public key configuration. But with that configuration, you cannot justify that it or find that that account belongs to me.
Okay, so this is how it is like it is completely secure. Like if I'm not going to share my key na, then no one will be able to understand that that transaction has been made by me. Okay, so these are a lot of mathematical stuffs, small, okay, the encryption and all those stuffs, how these internally works. So a lot of things are there to talk, but we are running out of time, so I will move further. So blockchain, okay, blockchain not then used by the thing that is the Bitcoin. So any questions? If you have, just ask if you have anything to ask. How blockchains will be affecting Web3? Yeah, Web3 is something like that. What you what I have tell the decentralized centralized app. Okay, so in case of Web3 now, it is decentralized. Like if it is not stored in a certain server, so I'm not change it from that server. If I can change it from that server, but it is distributed in a long, like if 1,000 machines, it is not possible. The Web3 is something like that. It is distributed. The app is it is distributed in a and the data as well, it is distributed in a long number of servers. So Web3 is obviously utilizes blockchain in a same way the Bitcoin works. Bitcoin also utilizes blockchain. So Web3 will be going to a very important operation. Okay, a lot of things are there to talk, like the medical data, how medical data can be stored in blockchain with a very unique that is also very unique thing. A lot of medical companies involved in blockchain to store their medical records. So a lot of things are there, but yeah, Web3 is something definitely it is completely related to blockchain. So you can just make it, so the solidity you should learn solidity, and apart from that, like solidity and the nodes, how those things works, and you can just find it. Yeah, a lot of resources are there. So these things, yeah. One more thing I want to add, actually I just recalled it right now. One more thing is with this blockchain and this kind of cryptographic system are there. So if I'm doing the transaction with a traditional way, that's based on the bank account that we used to do these days. So if just assume one scenario. So okay, I was thinking about it, that's why I'm also sharing with this with you all. So just assume one thing. The whole you can say the internet or the processing infrastructure is down. Okay, the whole infrastructure is down. It will not going to happen, hopefully. So but assume it, the whole infrastructure is down. So what, in case of blockchain na, I need machines to do the transaction. It is not possible to calculate hash value. Okay, with just I cannot the hash value calculation that you are seeing. If you and I will be going to do it, it will take, going to take a lot of time, like years of time will be required. So with that and the public key and private key, it cannot be verified without machines. Okay, but the traditional banking system that we are using right now, if just assume it, if all the system is collapsed, okay, so still I can make the transaction based on the account number, where it is going to be debited and where it is going to be credited. It's very simple. But in case of blockchain na, if you lose that machinery na, it's totally impossible. So to do it in paper pen, uh, obviously it is based on maths, but it is not possible to do it with human brain. Okay, because it will take a lot of time. So I hope you guys you guys are interested a bit about blockchain. So I'll move further to IoT. Okay. How can we stop sharing our private and public key? Yeah, say again what you are saying. How can we stop sharing or not showing our public key? No, public key is intended to share. Okay, public is not something that you are going to hide. It is made, the architecture is made in certain way that you should share your public key to receive messages, right? If you should share, in case of blockchain, the messages are the data are the transaction or the Bitcoin. Okay, if you are talking about the economy, the Bitcoin, like if you are receiving the money from a certain account, you need to share your public key. Okay, so it is very required. So public key sharing is like necessary, and no one can do anything, like no one can do anything with your public key, because public key is used to receive the thing. Okay, so you can receive thing from anyone, but the private key is used to send something. So private key can be used as your identity,
but the public key can't be, because public key is something that is used in receiving but the private key is something like that when you send it something. So when you send that, private key defines that it is coming from you. Okay, hope you got the answer right. Yes, bhaiya. Okay. So any questions? Otherwise we'll move to a new topic, that is IoT. That is also one of my favorite topic. Okay, so what is IoT? Anyone knows the full form? What is IoT? Internet of Things. Yeah, Internet of Things. Internet of Things. I think a new branch is added in our college, like IoT, na? A lot of Yes, yes, yes. students are there from Oh, IoT. BTech IoT. Yeah, BTech IoT. Great. So that is also a very amazing thing. So Internet of Things. So what is things? Things are the basic thing that, like, this mouse is a thing. Okay. So every like this, even this charger is a thing. Okay. So a lot of stuffs are like things. Every like your toaster, your heater, your room heater, your AC, everything is thing. Okay. And the Internet of Things is something uh, like that. It is a method, like what we do with the internet, we communicate. Okay, we do the communication with the servers. Okay, but in case of Internet of Things, the things used to communicate over the internet. Okay, anything it could be. Okay, like it can be used in medical fields, it can be used in industry, like it can be used in a lot of stuff, like agriculture, a lot of stuffs are there. So let's move further. So the interconnection via Internet of Computing devices embedded in everyday object, enabling them to send and receive data. Send and receive data. And one more thing I want to add, that like just not the sending and receiving data. Receiving the data is something like the Internet of Things has majorly two part. If I divide it, the one thing is you can say it as the hardware part, or more specifically, if you're going to say it is embedded systems. Okay, sometimes it is the microcontrollers are involved, and sometimes microprocessors are involved, depending on how what we need. Okay, so and the another aspect is the internet. Okay, the software part, because we are going to send data, receive data, so everything will be stored in a certain server. Okay, so it will be going to stored in a server, so we need a specific architecture to communicate with human devices, like our phone, our laptops. Okay, different kinds of device. And that device, that is the hardware, the things that we call. So things may have what they have. They can have sensors and actuators and the processing units. So these three are the basic things. So what is sensor that sends the data. Okay, actuator are those that makes the change in the environment. Okay, for example, the temperature sensor, it's a sensor. Okay, and the actuator is something like that, that does the changes in the environment. For example, actuator could be a fan. Okay, so if I start the fan, temperature will be going to it will be going to drop. Okay, so this is and one thing that is intermediate is the processing unit. So processing unit may have the microcontroller or microprocessor, but basically in case of IoT, majorly microcontroller are used, majorly. But it is not like it's not a hard and fast rule that every time we'll be going to use microcontroller only. Microprocessors are like, if we have the heavy task, we may shift to microprocessors as well. So, and the third thing, that is the servers, where the data is going to be stored. So I will just show you some of the devices. Okay, these days I'm not working on a lot of devices, so I have a couple of devices. So I will just show you a little bit of. Okay, I will show you a little bit of devices of my that I have. Okay, so this device, you can see, is it visible? Just confirm once. Yes, properly Okay, visible. yeah. So this is called a microcontroller based board. It is very famous. You guys have already heard about it. It's Arduino. So it's have an input and output ports. I/O, that is called input output. So input and output. What is input? Input where the sensor, the data from sensor is received, and what is output? Output is something like that, where the actuators are given the output to do certain operation. So like this one, this is also a board. Anyone know this? The name of this one, what it is? Anyone, any guess? If you don't know, just say no, no issue.
You guys are just Is it beginner. Raspberry? uh no, it's not basically Raspberry. It is a Node MCU. So what is it's based on a ESP32. So ESP32 is something like that. It has a Wi-Fi module, so you can connect it with any Wi-Fi devices, like if you like any normal Wi-Fi devices. And it also have the processing unit. Definitely without processing unit you cannot process data. So apart from that, you have the IO, like IO ports, input and output ports, to sense the data. IO ports are having two types, like basically they're analog and digital. These are like more electronics kind of thing. But here I'm going to talk more about the servers things. I'm just giving you a certain explanation. So this is the a certain kind of, you can say, actuator. Okay, it could be used to turn on, fan off. It's a relay. Okay, it's a relay. So this device, okay, this device, okay, this device is a GPS module. So if you install it somewhere, you can just take the GPS data and get your actual coordinate and upload that coordinate to the server. And from the server the user can fetch those data. Okay, so this is complete the function of IoT, just embedded system added with the internet functionality. If you remove the internet, it is just a simple embedded system. If you add internet, it is IoT. Okay, so apart from that, this is one buzzer. Okay, this is buzzer. Okay, this beeps. Okay, this one is called Bluetooth module. uh, Visible, it is visible. Yeah, now I think it is visible. So this is called Bluetooth module. So Bluetooth module can be used like you guys have seen watches, uh, like smartwatches that you guys are having these days. So I think this one, like this one, this is a smartwatch. So you can see that you can connect these kinds of device with your mobile devices, and your mobile device can upload that data to a certain server as well. And sometimes it may not. So these kind of system are also based on Bluetooth modules. Like these kinds of Bluetooth modules are implemented. Obviously it's a big module, but those modules are pretty much advanced. Okay, and they are pretty much smallish size. So they are costly as well if you're going to buy it. So but for experiment purpose, the simple module doesn't cost a lot. So apart from that, this one is a light, like infrared based sensor. And one more thing that I want to add, like there are certain uh, processing unit depending on the use. Like the Adreno is something that is really slower but very famous because it is very easy. Okay, and this one is it is also a microcontroller board, and it is made by Texas Instrument, and it is a quite advanced board. Okay, you can do a lot of high speed calculation. Just the speed of difference of the frequency, like how much in how much speed it is going to do the calculation. Okay, so these are the pretty much hardware kind of thing. So initially I learned a lot of hardware in my you may if you feel good. So in my initial first 1.5 year I learned a lot of hardware. Then I shifted to like software portion. So currently I am working on definitely I'm working on software, but I really like to learn hardware as well. So I think you have a little bit basic know-how of what is hardware. Okay, now we are going to shift to the internet things. So internet have internet, or you can just for ease you can say web development. Like in the beginning you guys have got a session for web development as well. So there are methods to store the data in the web. Okay, their APIs are involved. Okay, a lot of things are there. So definitely there are multiple method those are involved in case of just uploading the data. So the uploading data, for I am just naming a few of them, not like a few of them. One is you can say MQTT servers. It is based on publish and subscribe based thing. So if you even if you learn just a simple web development, you will get to learn. But these can be also used in IoT as well because they work well in these environments. Okay, there are another things are simple API calls. Okay, you just created an API to read the data and to upload the data. Okay, so the hardware is going to keep pulling the data from the server, and whenever it get the changes, it do the operation. So this is how the IoT that device work. And one more thing is that, like
if multiple devices are just fetching the data from the server in every second, and changes is not very frequent, so in these case these kinds of architecture flops, you get flops. So for fixing these stuffs, there are like a lot of new things are there, like web sockets. Okay, you will also learn if you just learn about messaging apps, that those apps are also based on web sockets. So and that can be also used in IoT devices. Are there a lot of things are there to learn? Okay, even from the hardware perspective as well as the software perspective. So the history of IoT, these are a small history, like where it start. Okay, where anything, like if you just send the data wirelessly to certain server and it is stored there, and user sends the certain operation. For example, if I am able to just control the light and switches of my home remotely from a certain location, so it's a IoT based thing. I have made those projects when I was in second year, so you guys can like get the link if you wish. I will share you with you all if I have those things. But the project, all the projects are not with me right now. I will show some of like one project, because the like making a new project involve the hardware component of the previous one. So at an instant you can have only one project if you are not funded from a bigger organization. Okay, so application of IoT are a lot of applications are there, like health monitoring. Definitely health monitoring is something like that, that the smartwatch that you guys are wearing these days, if it upload the data to a server, it's a IoT based thing. So even that, you guys have heard that maybe you guys have heard about that, the Apple watches that you see, the Apple watches have like the Apple company have detected some of the heart diseases of their user just with their Apple watches. Okay, so a lot of applications are there definitely. So but there are also black side as well, because if you are storing your data, okay, to a certain location, and your health data is there, so your health record or your health status can be tracked out. So if you are going to buy for example, you are going to buy a insurance, so your insurance company can just check if they got the access to your medical data now, so they can decide like I need to give them insurance, or I'm not saying like insurance is a good thing or bad thing, it's a different thing. But what I'm saying here, so they can decide like your information, with your information they can decide they are going to give you insurance or they are not going to give you. So storing those these kinds of data is also a risk as well. So a lot of things are going ahead. So a lot of things of learn and to do in future definitely. So how IoT works? IoT have a sensor, okay, or devices have a connectivity, data processing can be done in that hardware level as well, like this kind of hardware devices as well. If the processing is a little bit lighter in weight, and if it is heavier, then it should be performed inside. For example, if you are making a drone, and that drone is going to calculate the operation, something like that. For example, it is going to follow you, okay, follow up you, or it is going to decide depending on the machine learning or the deep learning logics. So in that case now, you need like in that kit what you need a central server that is going to process everything, okay, and do the just send the feedback to the that small device that will just do the according operation, because it doesn't have that operational capability. But you guys can say, why don't we add that capability to that device? Because it is costly, and it is why it is costly and why it is tough, because whenever you increase the processing capability na, then what happens, it will start to increase the power consumption. And as soon as the power consumption is increases na, then battery weight will also involve, if it's a like remote and flying device. If it is a stationary device, no issue, it's fine. And a lot of things like Raspberry Pi, I have, like Raspberry Pi is also one of the great device that could be used in case of like IoT applications. So a lot of things in industries it is also used in even in the West Bengal. A lot of companies are there that are working on agriculture related things. Okay, I have a little bit work, not much, 1 or 2 months of like ground experience about IoT. Not much, it's just a basic thing. When I was free in lockdown, I invested some of my time. So even in West Bengal, you will find some of the companies, they are just making IoT systems in a certain way that it can detect the level of humidity.
Okay, and just give a report to your mobile device and operate like your pump and motors remotely. Like that, for example, I have a ground of a huge ground, and in some specific part the humidity is specifically low. I need to increase that portion only. So what I can do, I can just turn on that specific part of the pump or the reservoir of that specific field. So a lot of applications are there in case of medical. A lot of online operations happens these days as well. Like the doctor can operate the machines. Okay, so these are the things. So the IoT key building blocks, the network middleware, and the application. So I will also show one of my project. Yeah, you can see here a lot of sensors are there. These. So these are the sensor, like this is the humidity sensor, this is the flex sensor. Flex sensor is something like whenever for example when you bend it na, it will give you approx reading. A touch sensor or the solar sensor, a lot of things, a lot of things. If I start to talk about it will take a lot of time. I will just move to my project. Okay, yeah, Python and Linux can also be used, even Java. If you're going to like maybe I'll be going to make a project, open source project based on Python Java, that will be related to IoT. So these are the stuffs. So I'll be going to show some just one of my project. So you guys are just interested to see my project? Any reply? Definitely. Yeah. Okay, so I'll be going to share it. Like I will just open the. So my screen is visible. Yes, Yes, Bhaiya. yes, properly visible. Okay, so you guys can see this the medical record. You can. Okay, so it is having three things. One is the beats per minute, that is the heartbeat per minute. Another thing is the body temperature. Okay, after that, the another thing is the electrocardiogram, the ECG. Is it visible? Yes, Bhaiya. Yes, Okay, yes. okay, okay. Yeah. Yes, So Bhaiya. you can see this ECG. So this ECG is the data. Whenever I click on fetch ECG, then only the ECG will be fetched from the device. So I'll be going to show you the device. So this is a device. Okay, this one is my device. I have just added a film of the iso like to prevent the electricity drainage from this device. Okay, so because it's a completely naked device. So this is the device, and uh, it is having a sensor that you can find in your smartwatch as well, that calculates your heartbeat. Obviously it is not that much accurate because it's just a simple I have bought it from like in Kolkata. I have bought it from a normal shop. So apart from that, there is a vibrator. Okay, this is the vibration motor. So you can you can wear it in your hand in this way. Okay, and after that it is having a display there. Okay, so what is the utility of these things? So and it has a cable as well, but it is not necessary to always apply this. So these are the probes that can be used to calculate, just take your ECG readings. These are the probes, and you have, maybe you have seen in movies as well, like you need to just paste it in your chest or different kinds of position depending on what you are going to see. So these are the ECG. Okay, so where what I am going to show you, like body temperature data and heartbeat per minute. These data, like in the server has the data, but it is not the updated data, because here it will only show the last 24 hours data. In the database a lot of history are there stored. And for case of electrocardiogram, it's not something that is checked regularly. It is depending whenever you are wearing the device, the whole setup. Okay, like this all these whole setup, then only you will see it. So just I will start this thing. Okay, so I will just start. Wait for a minute. Wait, just give me a few seconds. Okay.
I will create a Wi-Fi hotspot, so that what that device will do, that device will connect to my Wi-Fi device, okay, the Wi-Fi hotspot, and it will upload the readings, and you will be able to see it live. And in this time, I want to say something, that if you are interested to do it physically in the physical workshop, then in the feedback form also there will be some option, and for that you have to bear the cost of the devices that you have to buy. And then freely you can learn that how such type of devices can be made. Our plan is to organize one physical workshop on IoT device. Am I audible now? Yes. Yeah, you are audible, sir. Okay. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay, so all the participants, if you are interested to design a simple IoT device for your first IoT device as your first IoT device, then you can do it also. Okay, Yeah. so now you will currently see that how Kamran can read the data, heart rate, and that data is read by that machine, that IoT device that is connected through the internet, and then that server will throw the data in the web page. So that the Kamran want to show you. So if you are interested also to do the same or same type of thing, then there will be one physical workshop on IoT very soon. So for that you can register also. Okay, now Kamran, in this time you can continue also. Yeah, sure. Thank you, sir. So, like this, now it is turned off. Okay, I think you will not be able to hear see the reading that is there on this screen, because it is like I don't know whether it will be clear to you, clearly visible. So as you can see, it is now turned on. So it is trying to connect to the hardware. Okay, to the Wi-Fi module. Okay, now it is trying to connect. So now it is connected, and you can see it is showing the BPM and temperature. So it is a bit blurred or hazy image. So this is uploading it, and you will in seconds you will be able to see the value. Okay, the value is updated in this screen. It will just take few seconds to just show you the value in this. Like, yeah, see, just the data point is added. Okay, reading can't be of 100% accurate because I am just holding it with the sensor with my just one finger. So the temperature reading can't be just, it is intended to wear it in your wrist. Okay, so just wait for a few seconds. You will see a lot of data point will be added soon in the display. Yeah, just see it. Just wait for a while. Okay, new data point is also added, 80, 80. Okay, 82 and 82. Okay, and the body temperature is somewhere around 90. Okay, it might have like error because I told you I'm not wearing the device properly. So the temperature value like you can see the data is updated. Okay, like 3 data points are added, like 4. Okay, just reply once if you're seeing, if you're able to see it properly. Yes, sir. Yes. Yeah, I can Yeah, see it. you can see like data points are getting added. One more thing that I want to show you. Okay, apart from this, is also called a like medicine alert message. Okay, so whenever I send a certain message now, so this display will reflect that message here, and this vibrator will start to vibrate. Okay, so and this will only show you the message when you are wearing this device. And how it get to know about it, whenever it works on the IR light reflections to calculate the BP reading. And there are a lot of stuffs why and how it works, but here I'm just showing the application. So as you can see, yeah, so this is the vibrator. I'm going to send a certain messages, and you will be able to see it. Okay, so now you can see, just I'm going to just wait for a second, before I go. And you can also see the timestamp, like 18 17 29 seconds. I have started this, and the current time is 18:18. Okay, okay, 18:19, the new data has been updated. Okay, now I'm going to give the message. Like I'm just writing a simple message.
Okay. Wait for a while. It depends on the capability of the sensor also, that how much cost it is, how Yeah. accurate it is, how fast it can sense. So it depends, but for the learning purpose it is perfect, that it is happening something, that it is reading something and it is throwing to the server is showing to the data, everything is working Yeah, fine. you can see. I think you can see the vibration of this device. Okay, and the display shows that message. I think you can see. It depends on the camera quality as well. Okay. So this is the project. Okay, this is the project. So this is how it works. I hope you guys have seen that it displays the message, like this message. So you can write anything like if there's a doctor may write like eat this medicine. So that device will start to vibrate. You will look into your display and see the what message it is showing. Okay, this is how it works. Okay, you can just, I can feel the vibration, but you guys cannot, I think. So it also shows the message as well. So this is how it works. So I will just thank you all to be with me and be with us, the coding club, for a long time, and just see all those stuffs. So if you have any feedback, questions, so everyone is welcome. So if you have uh, Kamran, yeah. what will be the estimated cost Yeah, of that the device? estimate, I will just give you give the estimation, because the prices are these days are very fluctuating after the chip shortage are there in the global level. So the prices are really fluctuating. So for I will just tell the cost of some these just basic approx cost. So this node MCU, okay, that cost somewhere around 300 to 500. Okay, and after that that display will somewhere cost around 4 or 500. Okay, 400 something. So and apart from that like that sensor that is taking your pressure reading, it is somewhere around 100 to 200. So it is something around 1000, something around. So but for the initial, like if you guys opt for having the workshop in the initial level, we will just go with the some basic sensors, not these kinds of displays and all these are just a bit advanced, not much but bit advanced, because it requires a lot of like embedded related stuffs, because attaching more sensors and more devices to a certain controller involves a lot of the communication stuff, like they're SPI bus and serial buses are their I2C communication. So for the initial stage, we will just begin with some basics, and you will just need a small amount of code and just small amount of hardware. So we can start with a simple thing like creating a small web page and a small device that takes the temperature reading and upload it to the sensor, and there's a fan that that just turn on when the user sends something. So it will just cost around 1000, somewhere around. So it depends on the quality of the cost, the material you purchase, and from where you purchase. So the cost is that this project costs somewhere around like 2000, you can assume 2000, 1500. But we will definitely, if we start and in the in terms of workshop, we will start with very basic things, and that will cost around somewhere around 500, 600, like this, 700, 600. That's it. Any questions? What are the prerequisites? Prerequisite there is prerequisite there, not much prerequisite there. I will suggest you one thing, I was from West Bengal board, so I was not having any coding background. So when in the initial first year, now I will just share it. I don't feel any kind of shame in sharing these kinds of stuff, because it's not something bad. So when I was in first year, now I don't know coding. Definitely I don't know coding. So how I used to make project, you will not believe, but I used to make project just with the reasoning capability. Like if I see a certain video in YouTube, like if this logic is implemented in such a way and that function is implemented in such a way, then I am
getting these results. So if I make certain changes or in the line, like if I call this function here, and means I don't know the exact like how, what are functions, what are flow, what are procedural language, and how functions works, okay, how recursive calls works, I don't know Just this like kind of. recognizing the patterns. Yeah, with the pattern I was able to just make the project, and that's how I started. But after investing like a few years now, it makes sense, it makes a lot of sense to me, like if I really take sessions and all to just learn. So that's the thing. So prerequisites are like nothing, like just jump it and you will learn. And formally, if you ask the prerequisites are like you should understand a bit of HTML CSS, okay, HTML, CSS, JavaScript, and if you're going to certain advanced level, for the basic level, we can go with a lot of libraries are there: Adafruit, Firebase, MQTT. A lot of things are there. So if for those stuffs, you just need. Well, I just told you, na, you just need a basic reasoning capability to make the project. But yeah, if you're going to debug it, you're going to create something new, interesting, or a new problem you're working on, then you need a core or the hard concept of it. So it's not like that you gain all the concept then you make project. Now you will make project and gain the concept. That's how it works from me, and I also suggest hopefully that will also work for you. So that's it. Any questions? You can see also, like we turn on the device for 4 or 5 minutes, the data is updated. And also as you can see, the beats per minute is very fluctuating, and the body temperature is somewhere around constant. So it's not properly because I'm not wearing properly, that's why temperature is not proper. Yeah, one more thing that I told you, if you're working on something new, you can see a lot of videos on YouTube available there. So if you go and see a lot of videos to upload the ECG data, na, you will not able to find in this smooth level. So I worked on this like 1 or 2 months, like I worked on different kinds of techniques to upload the data. And if then I came to know how exactly I can just upload these data. If you upload this in a simple way, na, the data will be just corrupted, because it's a time series data. It's not just a single point. Time series data are those data that have the relation with the time and the data points. Like this is the values, okay, this is the 448. So in the scale of 1024, it is having a certain value, and this is the 612. So one is representing 10 milliseconds, okay. So I am just to maintain this relation. So these kind, if you are going to just a certain pro level, like not pro, it's not, I'm not just pro, I'm just a basic, like I'm in learning phase right now. So if you're just going to have something working very amazingly, then you need to just, it will take time, but start. If you're, and if you are for, like if a lot of students are there for IoT, then they should definitely start. If you are from other backgrounds, then it depends. If you wish to go with this, then you can. If you don't wish, then you can not. It totally, like I'm not working on these fields, but I really like to learn all these stuffs. So it totally depends on you. Any questions? Any question? Any suggestions to from for me? If you have, you can also give me. Hello, am I audible to you all? Hello. Yes, hopefully there is no question. Yes. Okay. And I can conclude that everyone has given a wonderful session, and hopefully it is clear to everyone that our motto was that what the modern technologies are there, and what are they, just to make you understand what is happening in the world. And one mini project also have been shown by Kamran, and that mini project or that type of mini project can be also done by you also, as Kamran suggests that jump first, that means do the project, fill it, and learn it. So it's a good idea. So you can also learn from that. Hopefully you have learned lots of things, and thank you. That such type of workshop is now about to conclude. So thank you every members, and thank you the participants also. Okay. Hey, anyone from the coordinators? I think we can end this call, right? If there is nothing to say or something like that.
Hello. The feedback form is available in the chat box. I would request everyone to please fill up the feedback form so that they can get the participation certificate. So well, it was a very informative and interactive session. Thank you so much everyone for joining. Now it is over. You may leave the session within 2-3 minutes. I will close that session, and feedback form is also given, so fill it up to get the certificate also, participation certificate that can be used in your marmooks to carry the marks. Okay, so within 2 to 3 minutes I will end the session. Thank you everyone.